up, pull you off the ground. Now you wanna blame me when you're falling down. Oh, I know, don't wanna be a hero. Oh no, when's it gonna sink in? Never sinking and falling apart. This love don't last in the dark. Hello, hello, check 1 2 3. Hello, 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 hello. તમે એમાંથી બોલો એમાંથી તમે બોલો ને ત્યારે જ hello, hello. કોઈ hello, 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 check, check.
You don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. You don't have to wear that dress tonight. Those days are over. You don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to put on the red light. Hello, 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 hi, hello, hello. Preview. Preview. Preview.
Hello. Thank you so much for joining the live stream. As you can see, our event has begun so well. We have received more than 300 participants for this event. बहुत सारे लोगों ने काफ़ी सारा इंतज़ाज़म दिखा के संस्कृति डिज़ाइनर्स मीटअप 2.0 के लिए रजिस्टर किया है. We want to thank all of them sincerely. Thank you so much for joining with us. आपके लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, आपके साथ जुड़ने के लिए रेडी है. हमारे गेस्ट्स आर ऑन द वे, आवर इवेंट इज अबाउट टू बिगिन एंड वी हैव सो मच सरप्राइजेस फॉर यू, वी हैव सो मच प्लान फॉर यू. आपकी हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस है? व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दिस इवेंट? व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? काइंडली कमेंट. आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं. आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं. इट्स गोइंग टू बी अ सुपर फन इवेंट.
Ready to meet you. They are super excited, and the team is ready. The team is here. हमारे गेस्ट्स आ चुके हैं. मिस्टर नीरज भट्ट sir is here. Dr. Anil Sinha, who is a well-known design philanthropist. He has designed curriculums, he has designed currencies, he has designed so many things all across the world. Is present with us, and we are super excited to meet Dr. Anil Reddy as well. Mr. Anil Reddy, the founder of Lollipop Design Studio, will also be joining us very soon. So I hope all of you are ready with your questions. I hope all of you are ready for an amazing meetup. Team is arriving. So many designers are here. 300, more than 300 designers have registered for this meetup. We expected around 150, but this is amazing. As you can see, our guests, uh, TCP, Mr. Neeraj Badgujar is here. Dr. Anil Sinha is here. They are super excited to meet you. They are super excited to share their vast knowledge with you. They'll be even answering your questions. So if you have any answers, if you have any questions, if you want to share anything with your design tribe, feel free to comment, and we'll try to bring the best to the attendees, to the meetups. As you can see, Dr. Anil Sinha, the director of GLSID, he has worked with several international organizations, is present with us with his 40 plus years of industrial expertise and educational experience. He is here to answer your questions. He is here to share his vast knowledge with you. With him is Mr. Neeraj Badgujar, sir. He is a shining beacon in the police department, in the law enforcement department. Is a graduate of IIT Delhi, and after that, he has served our nation with all diligence. If you think about it, law enforcement people are also problem solvers, just like designers. There's a lot that connects all of us, and the core of it is problem solving. We have industrial level problem solvers, we have amazing guests, all set to answer your questions, all set to share their message with you. It's going to be an amazing event. Call up your friends. Don't just enjoy it by yourself. Share this link with your friends, with your fellow designers, with fellow creative people. It's going to be an extravaganza of fun and so much of foresight.
Preview. 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 Hello, fellow tribe members and all the attendees, all the guests. As you can see, our designers are standing here. They are super excited for the meetup. They are getting their welcome kits, especially tailor made for them by Team Sandskriti. It's a small gesture from our side to welcome them to our tribe. Designers, when they get together, they can achieve amazing things. And today we aim to position India as the global design hub. We want to showcase the world how amazing, how powerful Indian design culture is, what a rich and iconic heritage we possess, and how we can leverage that heritage to achieve even more amazing things. 300 plus designers in physical at one place will get together and brainstorm over amazing things, amazing ideas, new concepts, fresh perspectives from young as well as experienced designers. You cannot get anything better than this. Our team is ready, our designers are ready, our guests are ready. Call up your friends, call up other people, call up fellow designers, call up creative people, ask them to join on this link. This is going to be one amazing event. It's a meetup of creative people, it's a meetup of creative minds, and as you can see, our volunteers are ready, our designers are ready, our guests are ready.
are working selflessly. They have worked super hard for this since last more than a month. The volunteers are working super hard, and it's amazing that these volunteers have joined by themselves. They have decided by themselves that they are going to put extra efforts only to make this meetup even more meaningful, even more successful. And everyone here is super excited for an amazing meetup. Our guests are here. We have worked amazingly for this. They are getting their custom made kit, by the way. If you can see it, they are getting stickers. They are getting diaries. They are getting their specially made merchandise. It's a small gesture of love from Team Sandskriti, because these people, these designers, these amazing creative people are now permanent part of our design tribe. If you want to join us, you can follow Sandskriti on Instagram and LinkedIn. If you have any suggestions, feel free to share in the comments. Feel free to share us on our social media platforms at LinkedIn and Instagram. uh, Tell us how excited you are. Yeah, this is not a formal event. It's not a one way event. I want all of you to be actively involved in this. आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो हम पूछेंगे उनसे, आपके साथ काफ़ी सारी बातें करेंगे. तो जो भी आपको पूछना है, जो भी आपके दिमाग में है, फील फ्री टू शेयर विथ अस. बहुत सारा मज़ा आने वाला है, बहुत फन होने वाला है, बहुत जलसा होने वाला है, बहुत सारी डिज़ाइन की बातें होने वाली है आज. तो डिज़ाइन की कैसी बातें आप करना चाहते हैं? क्या सुनना चाहते हैं? क्या समझना चाहते हैं? क्या जानना चाहते हैं? हमें बताइए. हम मिलेंगे आंसर्स के साथ. हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे लेजेंडरी डिज़ाइनर्स आंसर करेंगे आपके क्वेश्चंस. तो फील फ्री टू शेयर योर आंसर्स, सॉरी, शेयर योर क्वेश्चंस इन द कमेंट्स. और इवेंट का बहुत ही मज़ा उठाइए, इवेंट का काफ़ी मज़ा लीजिए. आपके फ्रेंड्स, आपके गेस्ट्स जो भी है, सबको बुलाइए. एज यू कैन सी, काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, और वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन 300 पीपल हु हैव रजिस्टर्ड फॉर दिस इवेंट. दे ऑल विल बी हियर. सब लोग एक साथ एक टी शर्ट में getting together to form a true global design culture, a true design culture where everyone is equal, and establish India as the global design hub. Preview. 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 Preview.
हेलो सारे लोग एकदम शांत है गाइस थोड़ा जोर से आर वी रेडी और जोर से आर वी रेडी
ये लोग एक्चुअली बहुत मेहनत करके आए, उसके बाद मेरा चेहरा देख लिया इसलिए शांत हो गए. So don't be upset. I am not the only one who's going to stand here and talk. I have my fellow tribe members over here, Drashya and Pushti, who's going to join me very soon. And please don't be introverted. That's a word that doesn't go with this kind of a setting. We are here to talk about your problems. So who better to talk about your problems than you, right? थोड़ा सा और टाइम, क्योंकि बहुत सारे जने हैं जिन्होंने रजिस्टर भी नहीं किया था, बट दे वुड हैव टू कम, सो वी विल बी अटेंडिंग ऑल ऑफ यू. सो जो भी है थोड़ा सा टाइम दे दीजिए. वी विल अबाउट टू स्टार्ट द प्रोग्राम. हाँ. अच्छा, यहाँ पे पहली बार कौन आ रहा है? Who's new to Sandskriti? Please put your hands up. सर आप तो नहीं, आप तो बहुत पुराने हो. So, how many of you had expected this sort of an event, this sort of a meetup? Like, what were your expectations from Sandskriti? And so far, how are we doing? Please let me know your thoughts. Anyone? मैं तो randomly जाऊंगा भाई, मुझे अकेला बात नहीं करना. This is your first time with Sandskriti? Good, it's good. That's a very lukewarm response. How do you like the setting and the arrangement? All is good. All. Great, we have our first new tribe member appreciating us. And over here I have with me my partner in crime, Jenil. पहले माइक ऑन कर लेते हैं, फिर क्राइम करते हैं. Hello. Okay. So these are the things that we'll avoid. These are the bloopers that go for the blooper reel. And oh, I'm on the projector. I look nice thanks to this t-shirt. And this is how you solve a problem. It's very simple. Design, right? Design solves काफी सारे problems. और वही सारे problems के solution के लिए हम यहाँ पे आज एक सब इकट्ठा हुए हैं. आपके दिमाग में काफी सारे questions हैं और इनके दिमाग में काफी सारे आंसर है. So we thought, चलो एक दूसरे को मिला देते हैं. And that is what a community does, right? And that is what Sandskriti community आज करने वाली है. आपके questions, आपके ideas, इनके questions, इनके ideas, हम सब साथ मिलके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर निकालेंगे और इंडिया को ग्लोबल डिजाइन हब कैसे बनाना है उसके तरफ लेके जाएंगे. उसके पहले हम काफी सारी एक्टिविटीज करने वाले हैं आपके साथ. आर यू गाइस एक्साइटेड? आई कांट हियर यू. स्टिल कांट हियर यू. यस, ये हुई ना बात. काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि ये ऑनलाइन भी है. तो यहाँ पे एक ऑनलाइन लिंक है विच इज ऑफ यूट्यूब. तो आप अपने जो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स है, अगर उनके साथ ये शेयर करना है तो आप कर सकते हो, तो ताकि वो हमारे साथ ये मीटअप में जुड़े. बिकॉज एक सेकेंड, ये आपका इवेंट है, ये हम सारे वॉलंटियर ने मिलकर ये इवेंट किया है. दिस इज नॉट समथिंग दैट सम कंपनी इज डूइंग इट. इट्स ए कम्युनिटी. ये कम्युनिटी एक इवेंट कर रही है. पूरा लिंक ऑनलाइन है. आपको थोड़ी देर में आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा. आपको जितने भी डिजाइनर्स को जोड़ना है वो लिंक प्लीज फॉर आप शेयर करना. वी वांट everyone to listen this particular the whole show, this meetup. हमारे यहाँ गेस्ट आ चुके हैं. वी आर जस्ट वेटिंग फॉर अदर पीपल टू ज्वाइन सो दैट वी कैन स्टार्ट. ठीक है, तो अभी लिंक मिलेगा, आप प्लीज शेयर करो. आपको ये ध्यान रखना है कि ये मीटअप आपका है. प्रॉब्लम आएगी हम मिलके सॉल्व करेंगे, और प्रॉब्लम आ रही है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट विल सॉल्व इट टुगेदर. ठीक है. और अभी जो आवाज आई थी ना, जितनी जोर से, उससे ज्यादा आवाज आएगी इस मीटअप के बाद. वही एनर्जी देखनी है कि भाई पहले जो आवाज आ रही थी और जो बाद में आवाज आ रही है उसमें कितना दम है, हम देखेंगे. वही हमारा गिफ्ट है, हमें और कुछ नहीं चाहिए. वी वांट एवरीवन टू बी पार्ट ऑफ इट. इफ यू आर हैप्पी, दैट इज अ गिफ्ट फॉर अस. वी आर
से फिर नीचे लेके आएंगे. Let's do this and let's. How many people are here by the way? हमको मुझे ऐसा नहीं सुनना चाहिए कि there are 10 people. If there are 10 people, I should get the feeling that there are 200 people. That's how loud you guys should be, and that is the energy of the meetup. Come on, we can do this. Let's start. मजा है? नहीं मजा है? और एक बार करते हैं. एक बार वापस हो जाए. अब दृश्या करेगी. मेरा आवाज उसकी आवाज मेरे से अच्छी है. वापस हो जाए. एनर्जी नहीं यार, थोड़ी एनर्जी लाओ. ये पीछे वालों के हाथ में दर्द लग रहा है मुझे. हाँ, मैं जाती हूँ, रुको. एग्जैक्टली. देवो, तुम इस साइड जाओ, मैं इस साइड का देखती हूँ, ठीक है? सारे लोगों के हाथ के मूवमेंट होने चाहिए, सारे दर्द दूर हो जाएगा. This is a meetup and a yoga class rolled into one. Please contribute in my endeavor of making you guys talk. सारे लोगों का हैंड जेस्चर दिखना चाहिए, तो ही मैं अलाउ करूंगी, वरना प्रोग्राम आगे ही नहीं बढ़ेगा. तो सोच लेना फिर, अगर लेट हो रहा है तो. चलो देवो, स्टार्ट. वेरी गुड. और एक बार हो जाए. वेरी गुड. ओ अभी आवाज आई, मजा आ गया. चलो. तो क्योंकि काफी सारे लोग अब बैठ चुके हैं, कुछ करते हैं यार, मजा नहीं आ रहा. एक गेम खेले, एक कुछ एक्टिविटी करे. इसको तो पहले मुझे प्रोनाउंस कैसे करें मुझे नहीं आता. So this is an activity that went really great last time. The last time we had designer meetup, design studio. तो काफी लोगों का ये रिक्वेस्ट था कि ये क्विज तो चलना चाहिए, लेकिन इसको हम क्विज नहीं बोलेंगे, इसको हम एक्सक्विज में बोलेंगे, ठीक है? और UI के ऊपर ये क्विज है, काफी इंटरेस्टिंग क्विज है. लेट्स गेट स्टार्टेड. So, typeface designer called DQ was recruited in 2004 by a fellow designer to create a font for a secret client. He could improvise on the font that he had created 7 years ago, focusing on screen readability. The secret client turned out to be Microsoft. What font is in question? कौन से font के बारे में बात कर रहे हैं? तो Microsoft ने बाद में अपना लिया. Anyone? Here and over there. Great. We have our first hand. On top. Oh, time, Suman. Let's check this. Is it time, Suman? Does anyone have any other answer? Anyone else? Very good. So we have 3 answers. Let's check which one's the correct one. यही होता है, हमारे आंखों के सामने बहुत कुछ होता है, मिस कर जाते हैं. काफी कॉमन पॉइंट है. सेकंड क्वेश्चन. लेट्स चेक द सेकंड क्वेश्चन. काफी बड़े क्वेश्चन है, वहाँ पे नहीं देखना, मुझे सुनना है, ठीक है? इसका आंसर बड़े सिंपल होंगे. Rashya, would you mind taking it on? 1956, a PhD candidate buys an electronic device to celebrate his degree, but is disappointed.
Anyone's got a different answer? I've got one answer, and the tribe member says it's Motorola. Anyone with the answer? Janil, whenever someone. Great. That's the best part about Janil. Janil doesn't want to win. Janil gives away hints so that others win. And that is how a community works. You have to be a team. So he was your teammate. He gave you the hint and you got the answer right. Okay. It's a pretty interesting question. Has had a cursed history since its inception. Its first parent company, Kosa, went down under after 3 years. It was then bought by another company called Aldous, which later was bought by another company. This software was responsible for Jurassic Park's Oscar in 1993, and from then onward, the journey of the software has been smooth sailing. What software are we talking about here? It's a pretty easy one if you think about it. If you From the audience, we cannot see Anybody any in the hands. crowd? Come on, guys. The software company. Okay, so Devo, can we have a clue? okay, I will go to the clue master Janil once again. Janil, would you like to give me a clue? The company is very popular. You use all of their softwares. The company. Pusti, here is. Yeah, you got that right, but Adobe what? Da Vinci? Not really. Adobe Photoshop? Akshay Makwana. Let's check if your answer is correct. Great. Can we have a round of applause for him? What's his name, Devo? Akshay Makwana. Akshay Makwana. Can we have his name written down, please? See, if we think about it, anything is possible. What looks like an obscure answer, हम अगर 1 minute सोच लेते हैं तो मिल जाएगा. Can we have the next question, please? Are you guys ready? Is this entertaining? Is this engaging? Do you guys like the questions? Please let me know if you don't. I will do something else, completely different, just to keep you guys awake. It's a Saturday, I know, but this is fun, right? I hope this is fun. Great. Yes, मैं आवाज डाउन हो जा रही है सबकी. थोड़ी एनर्जी लानी पड़ेगी. Okay, so here we go with another question. A Japanese janitor called Gunpei Yokoi was working in one of the world's biggest companies. One day he invented a toy that caught the eye of the CEO of the company. The CEO wanted the toy to be launched in the holiday season. He obliged and the game was launched and sold 1.2 million units. What is the company and the toy in questions? I Acha. guess we have somebody here. Okay, great. Might be Pac-Man. So there are 2 parts to the question. Pac-Man. We have to name the company and the toy. Okay. एक Japanese janitor था जिसका नाम था गुनपेई योकोई, who was working in one of the world's biggest companies. एक दिन उसने एक खिलौना इन्वेंट किया जिससे वो अपना CEO का दिल जीत लिया. The CEO wanted the toy to be launched as an official product of the company.
And when it was launched in the winter, it sold around 1.2 million units. So from a janitor, he became a success. And that's the kind of inspirational story that we want to talk about. So anyone, anyone Hot would care to- Wheels. Hot Wheels. Hello. Hot Wheels, I am afraid is not the correct answer, but good guess. Okay, we have one here. Lego. Lego, no, I'm sorry. Can we have another guess? Anyone else? We cannot see. We have one here. Game Boy, Nintendo. Who's that? Can we have a round of applause, please? Can we have your name, sir? Akshay Great. Sharma. Guys, please note down Akshay Sharma gave the right answer. Yeah, it was pretty easy if you look at it in hindsight. The man was Japanese. Nintendo is a Japanese company, and there are very few competitors of Nintendo when it comes to sales. So good, great guess actually. I am sure it was a guess, or did you know about it? I am very excited to talk to you now. Did you know about? Yeah, we all have played this. Great. So you have a gamer in the audience. Okay. This is a pretty easy one for car enthusiasts. This is not Audi. Okay? ये लोगो तो सबने देखा ही होगा. हाँ, ये ओलंपिक का लोगो है. तो ये ओलंपिक के लोगो में जो 5 रिंग्स है, ये अलग अलग कलर के हैं और उसके पीछे एक वाइट बैकग्राउंड है. अब ये वाइट बैकग्राउंड और ये 5 कलर जो है, इनके सिग्निफिकेंस क्या है? What is the significance of the 5 colors and the white background? We have Akshay again, I guess. 5 different continents And the white color? peace, like unity. I will give that to Akshay. Akshay, I'm hoping you're not using Google, right? No. Great. We should meet sometime. I really like you. Can we note down Akshay's name, please, again? Done. Great. Okay. Drashya, why don't you go ahead? Sure. Please, we'll listen to the question first and then we can put our hands up. I know you guys are getting excited. It's lunch. The number 31 signifies tradition for this particular brand. Over the years, they have undergone multiple reiterations for their logo, but the number has managed to be present in all of them. The number stands for the original 31 variations that were served to the customers. Which brand's logo is this? Okay, Oh, I one see here. many hands. Okay, Baskin which and one? Robin. Okay, I'll give it to him. I think we Baskin already Robbins. have the answer over here. Yeah, right? The What's your guy name, in the sir? second row. Yes. What's your name, sir? Yes, Soratia. Okay, can we Yes, have his Soratia. name written down, please? Great. I hope you guys are not hungry after listening to Baskin Robbins. Okay. So since we are talking a little bit about Indian culture in the meetup, here's a question that I thought could tickle your mind. A brand that brought jobs and fame to women with its typewriters. It also designed a machine that could incorporate regional languages to give due representation of the Indian culture. It started off in 1955 against the bigwigs of the typewriting industry like Remington and was immediately successful. What brand is being talked about? Can we have the microphone? Yeah, over we here, have. please? I think, Godrej. yeah, please, can we have the names of ma'am Girl and in the sir? first row and the Ma'am men. and sir, both of their names taken down, please. Both of them. Divya Bhavsar. Okay, and your name? Ishika Anandani. Great. Okay. I would Darshya. like to go with another question. A very famous brand's product that has the logo on it. The mountain is symbolic of the Matterhorn mountain. Is I cannot think read, there's a I think. readability issue. We'll wait for sir to move. Sorry, I'll repeat the question again. A very famous brand's product that has this logo on it. The mountain is symbolic of the Matterhorn mountain in Switzerland.
There is bear carved inside the mountain, symbolizing the unique flavor of honey found in the product and the fact that the product is made in the city of Bourbon. Which brand are we talking about? We have had a lot of We have responses. many, हाँ. Yes, Easy है ये तो, पता I होगा. guess we have Parth here. I guess that's the chocolate we all love, Toblerone. Great. Am I right? Great, yeah. Great. Are you a Friends fan, Parth? Are you Joey's fan? Oh yes. Oh, yeah. So you know Toblerone pretty well. I think you have a sweet tooth. Most of us do. अरे भाई रुक जाओ बोलने तो 1955 was an important year, again readability issue, but no problem, we'll continue. 1955 was an important year for corporate identities as visual design began to be incorporated. A famous design legend who once said everything is design, designed the logo for IBM to convey their futuristic intentions. The designer has also designed for brands like Atlas, ABC, and UPS. Who's the designer? Great. तुम लोगों को क्या लगा मैं ब्रांड का नाम पूछने वाला हूँ हाँ? मैं रिसर्च नहीं करता कौन था यहाँ पे Paul Rand. Fantastic. Can we have a huge round of applause for him? Can we have your name, sir? Kawal Patel. Kawal Patel. Great. Please take down his name. What's the name? Hello. Yeah, great. Okay. So India, as we know, has innovated a lot of things, right? So one of the oldest universities of the world, this place is the origin of metal art, which migrated later to places like Tibet and the Malayan Peninsula. Which university are we referring to? We have one We have volunteer. some hands. Nalanda University. Nalanda University is the right answer. Great. Rishi. Rishi, can we Rishi have a huge Asha. round of applause for Rishi? Please note his name. He's really, really thorough with his Indian culture stuff. So, Janil, what do you think? How has been the responses? Oh, Janil is busy. Janil is giving me the eye. Great. So, Nalanda University, as we know, is one of the oldest universities of the world. And India at one point of time was called the knowledge center of the world. Around 4,000 years ago, when nothing was there, Nalanda University was educating the citizens of the world. And you couldn't get into Nalanda University just like that. It had a higher cutoff mark than St. Stephen's of Diu. So you had to sit for Sanskrit examinations in your own native country, and only when you passed that examination, you would be allowed to come and apply for Nalanda University. There were other universities as well, like Vikramshila, Takshila. And what these universities did was they helped the spread of Indian culture. And if you look at our country's origin story, the Harappan civilization is of massive importance, right? So, I'll just leave these two pictures over here to let that sink in while I talk about the Harappan civilization. The Harappan civilization started and it paved a new way. All of modern architecture that you see has some sort of relevance to the old Harappan civilization. In fact, we all think that underground drainage is the gift of the West. It's actually not. Harappan civilization was the first civilization to implement underground drainage.
And that is the level of modernization we had 3,500 years back. Once Harappan civilization established itself, India became a center of attraction. And Drashya was working with me yesterday on this, and we figured out that there are actually a lot of structures that we don't pay enough attention to, but are a great representation of what design stands for in India. There's this temple called Surang Tila. I don't know if a lot of you have heard about it. Has anyone heard of Surang Tila? Surang Tila is a brilliant example of design because it was made 2,500 years back in modern day Chhattisgarh, and then an earthquake happened. And everything became dirt and the entire structure went underneath. But in 1875, when Alexander Cunningham excavated that place, nothing had happened to the temple. Everything around it was transformed into debris and rock and dust, but the temple wasn't scratched. तीसरा जो है, हाँ बोलिए मैम. 1 minute. We need to attend one guest. Okay. Which is Anil Reddy, sir. Oh, great. So, go ahead. So, seeing our enthusiasm and our participation, Mr. Anil Reddy of the famous Lollipop Design has decided to be here and spend some time with us virtually. Can we have a huge round of applause for Mr. Anil Reddy? So we thought we would make Anil Reddy sir's introduction a bit more special. A traveler, an artist, and a visionary and a man who has initiated a culture shift in design. Today, it is one of the best design studios, and his studio is doing wonders in positioning India as a design hub. Which studio are we talking about? Can we have a huge shout out for Lollipop Studios? Lollipop Studios! So, Anil Reddy sir is a man of many talents. We have done a thorough research on him, but better way to hear about him than from the horse's mouth himself. He was in New Zealand. He had studied extensively, but then he decided, no, that I should get back to India. मुझे India वापस जाना है, और India वापस जाके मुझे India पे काम करना है. And that is when he started this little brainchild of his labor of love. And when I was going through Lollipop Design and their website, I realized that the nomenclature, जो नाम रखा गया है Lollipop Design का, वो काफी क्यूट है. अनिल रेड्डी सर को अपने बेटे की याद दिलाती है वो नाम, क्योंकि उनका जो बेटा है वो जैसे लॉलीपॉप बोलता है वो उनके जहन में बस गया और उसी से अपना नाम स्टार्ट कर दिया. एंड दैट इज हाउ सिंपल थिंग्स आर, एंड दैट इज हाउ ग्रेट माइंड्स सिंप्लीफाई थिंग्स. So that's one of the learning curves that I have learned from Anil sir's history. He's a great avid traveler. उन्होंने बहुत सारे countries वो घूम चुके हैं. And he believes that the city of Berlin is one of the major cities when it comes to street art. How many of you are excited to meet him? Please, we will be extremely energetic when we meet him so that he feels happy. He's making a lot of time for us today in spite of his engagements. So we need to act the part. All right? So when we see Anil Reddy sir, जब हम उनको देखते हैं, we'll shout out his name. Hello, Anil Reddy sir. And that is how we'll welcome him. All right? थोड़ा टेक्निकल ग्लिच तो बनता है यार. 2 मिनट रुक जाते हैं, क्या होता है. Meanwhile, एक और क्विज का क्वेश्चन पूछ लेता, मुझे अब मजा आने लगा है, सब लोग आंसर दे रहे हैं. तो
सबसे बड़ा जो विष्णु का टेम्पल है वर्ल्ड में, वो कहां पे है? आई सॉ हर हैंड फर्स्ट. Indonesia, Bali. Close enough. Wait, he was second. We have another hand over here in the third row. I actually saw him, so he's right. We will have questions. Don't worry. So, what's your name, sir? Good afternoon, sir. Can we have a huge round of applause for Mr. Anil Reddy? Hello, everyone. Anil sir, Am I thank you for audible? joining us. Yeah, sir, you're audible. Is Anil Nice. sir audible at the back row as well? Is Anil sir audible? Volunteers, could you let me know? Give me a thumbs up. Yes, of Great, course. great, sir. Sir, Awesome. how do you feel seeing this sort of a crowd turn out to come and see you? First came to Ahmedabad. Can we have a Can round we of applause? reply? Great. So I can speak Gujarati. Little. I'm married to a Gujarati, and very happy to see you all here. What a wonderful crowd! And Ahmedabad is a very special place for me because Ahmedabad was announced as a design capital of India, and big round of applause for that. Did you know about it? Ahmedabad was announced as a design capital of India. Hello. You didn't know? Did you know? Did anyone know? We'll Never mind. agree that we knew. Yeah, all the best design schools in India is in Ahmedabad, NID to all the top schools. Right now, we also have UID and so many design schools. I don't know what is that with Ahmedabad that attracts a lot of creative talent there. I always visit Ahmedabad often, and there's something about Ahmedabad. One of our first client was in Ahmedabad, and the best part about the Ahmedabad city is the food. That's the only place where I turn vegetarian. And whenever I'm in Ahmedabad, I don't feel like I'm a non-vegetarian. I just feels like I'm a vegetarian, and I enjoy the food, especially the street food and stuff. Anyways, first, thank you very much to the entire team for bringing all the wonderful designers together, and a big round of applause to the Sandskriti team. And let me tell you this. I'm an artist by heart. I'm a designer by soul. I'm an entrepreneur by choice. And this is my introduction. And I started my journey back in 90s. 90s, when I guess most of you were not born then. 90s was the time when design was handmade. Brochures were handmade. Leaflets, posters were handmade. No computers. Everything was handmade. So that's when I started my career. And back in 90s there was absolute no job for designers. So Bangalore, I'm a Bangalorean, born and brought up in Bangalore. The entire Bangalore had only two design studios, that is design agency, that is Ma Bozal and Trikai Gray, which was flooded with designers. So basically any designer passing out from a design school or a design college would have to wait for 6 to 8 months to get a full-time job. So we had to work for 6 to 8 months for free just to prove ourselves to get inside a design studio. That was the scene back in 90s. And a lot of people in my batch just quit design because, as you all know, it's very difficult to convince our parents to now pursue career in design, art and design. Today, I think you guys are blessed to to see that your parents are encouraging to build a career in design. Back then, if any student would consider design, right, they would get kicked out of the house. So I was one of those people where I got kicked out of the house after my 10th, and I did 5 years of fine arts and visual communication. And in 2000, I got into computers. I don't know what got me into computers, but I think Bangalore was going through that digital transformation where a lot of tech parks were set up in Bangalore, and Bangalore was slowly becoming that silicon hub of India. That got me into exploring the technology side of it. I got into coding. So very weird, right? Not many designers code. Can people raise hands whoever code any designers coding?
Can I see a good camera view of all the audience? I would love to see designers who code. Oh, great. We have a We lot of have many questions. hands. Very good, very good, very nice. I think this eventually will change. I think early 2000, my life put me in a situation where I busted the myth of right brain and left brain. A lot of people still believe that there are people who are very creative and there are people who are very logic, and they think it's a god gifted talent. It is not. When life puts in a situation, you'll end up using all sides of the brain. So early 2000, I got into coding, and that was my. I thought coding was only meant for mathematicians and geeky people, but as I got into coding, I realized that it was so beautiful. I turned all my artworks into code. It's like I took technology as my canvas. All this while, I used to paint on paper and canvases, but this time I took technology as my canvas and I started painting on it. Getting into technology got me the world of opportunity opened up for me. Not one or two, but world of opportunity. Back then, websites were built using Flash, HTML, and all that, and eventually we saw that major transformation in the web world, and mobile phones were introduced, and then the entire design branched out of web to mobile, and now design is everywhere. And every user digital touch points, right? It's crazy. Thus, the entire world of opportunity has opened up for designers. Today, design is not just for websites, brochures, or newspaper. It's beyond that. Beyond that. So then after that, I worked in New Zealand for almost 10 years. I did my masters there. Then 2011, I came back with a very big dream of putting India on map for design. I was not sure how I was going to do that, but I thought I should take small steps and slowly build a studio that will build great products for Indian market. So started very small in a garage, and then Swiggy was our first client, Mintra was our first client. And Swiggy and Mintra, the challenge that we had was no Indians were ready to buy apparels online. So we had to change the behavior of Indian audience to buy apparels online. So today, look at Swiggy or Mintra, right? Today, people order food. When they think of food, they go on Swiggy. When they think of fashion, they go on Mintra. So that's the kind of transformation we gave through design first approach. And not just this, right? Not just Swiggy and Mintra. Today, if you think of payment, you go on Paytm. If you think of a taxi, you go on Uber or Ola. Just think of anything you, what comes into your mind is digital first. Think of movie, you'll go to book my show. Think of traveling, you'll go to make my trip. So digital has taken over. This has opened up world of opportunity for designers. With digital taking over, right, today designers are sitting in the front. All this while it was engineers driving a lot of things, now designers are sitting in the front. India is known as tech destination. Okay, not just because there is one Wipro or Infosys. There is heaps of technology opportunities in India. Every time I travel abroad, right, people think I'm an engineer. People think everybody in India is an engineer. This is changing. So all these years, right, whenever I travel to US, right, they ask, do you run a IT service company? I said, no, I run a design studio. And India is known for that, and we are very proud of that. Every product around the world, right, has something that Indian engineers have built, and we should be very, very proud of that. And why do people come to India for engineering services? Because there is plenty options for them. They have as big as Infosys, as small as the smallest design services, IT services company. Like how we go to China for manufacturing, right? In China, we have largest manufacturer and the smallest workshop. So if you have to ever manufacture something, you will go to China. But even that is changing. People are coming to India now, which is again a good news. Um, Early 2010, 11, and 12, things started changing. Now, India is not just known for IT services, India is also known for design. When I started Lollipop in 2011, when I used to chase clients in India, when Indian clients raise funds, that a startup, when they raise funds, they used to go to UK, US, European world, and Western world to get design services. They thought
Indians are not capable to deliver world standard design. So I took that as a challenge to solve that, and I literally begged clients in India to consider Indian design studios to give us an opportunity. And because only Indians know how to design for Indians, so thus we introduced the research. We got neuroscience people, we got psychologists, we got UX designers, UI designers, artists, front end developers, all kind of people to come and deliver a solution. Today, no single startup who has raised funds, not raised funds, go to any Western or European world. They get all the design services here in India, because India now has produced one of the best designers in the world. And thanks to all the top colleges, thanks to institutions, short courses, crash courses, all these people have created wonderful courses to people to enable and empower designers. And to be honest, I'm living my dream today. This is exactly what I wanted to see. I wanted to see India on the map for design. And I started my journey with 3 designers in a small garage. Today we are 230 people across 9 centers, 4 in India, headquarters in Bangalore, Chennai, Mumbai, Hyderabad. We opened a center in Vietnam. Vietnam has about close to 110 people. And we opened a center in Dubai. Actually, I'm sitting in Dubai. Today is my wife's birthday. We're giving her a surprise. It's just a thing clashing today. And we have a center in San Jose and Dallas. Look at what has design given us, right? All this while, design studios used to be very tiny, small setup where people build design studios like a lifestyle business. From building studios like a lifestyle where people used to bring 2 to 3 designers, only 2 projects. Today, studios like Lollipop, Think Design, or Fractal Ink have set an example that even design studios can grow beyond being just a lifestyle business. We aim to become 500 people team, not just in 9 centers. We want to open a studio in Korea, Japan, cover up the entire Asia, and also go towards Africa. So we already set the path and we're moving towards it. And big cheers to all the wonderful designers in India for trusting and believing in us and enabling and empowering us. Now, coming to my wonderful people in Ahmedabad, there is something about Ahmedabad. There is a whole lot of energy in Ahmedabad when it comes to design. Last time, just before COVID, I was there for to give a speech in UID. I also went to engineering college in Rajkot, and it was so wonderful to meet people so down to earth. And my good friend Pramod has got all the designers together, with a very big dream of giving you guys a wonderful platform where you can learn from each other and you can share your knowledge and use this platform to the best to connect to studios like us. Not just studios like us, but also all the studios across India, product companies across India, and build a wonderful career in design. And Sandskriti, what a wonderful name this is. And the portal will be launched soon. This portal will host all your wonderful designers and also industry leaders like us, and there's so many other people. We all are going to collaborate there. We all going to get to know each other. And the best part is we are in the front, leading the design practice in India. And today, design, like I said, it's not just the website or mobile app that we're designing. It's gone beyond that. We're designing IoTs, designing NFTs, we're designing immersive experiences, we're designing a new e-commerce platform in there where the clothes and using your. Cut some static images, you gonna have a real experience of all the apparel, shoes, watches, everything. We have also designed experiences where you don't have to sit and watch images of your future house, but you can start walking inside. This is the future of technology. This is the future of design. If you think you're going to become a UI UX designer designing websites, that's just one part, one piece of that.
It's beyond that. World of opportunities open up. While people talk about AI is going to kill the industry or automation is going to spoil the design industry, nothing is going to touch the design industry. Design is one of the reason why we keep mentioning emotion, empathy, right? It's only humans can put that. Only humans can bring that emotion and empathy. Robots or AI cannot bring that. AI will only take the existing data and mix it up and present it. But humans will go beyond that. Humans will understand humans and design a beautiful experience for humans. So no matter what AI comes, what automation comes, I've been hearing this for the last 23 years. People said computers are going to come and kill all the artists. Computers came and all artists used computers as their tools, and we started painting beautiful things. And then they said automation is going to come and kill all the designers. Automation came, nothing happened to designers. Now they're scaring with AI. AI is going to become our best friend, a tool that we will eventually use to produce wonderful designs. And we're going to go even beyond what we are today. So thank you very much, and so nice to see you all. Pramod, you're doing a great job, man. Keep it up, and your team Sir, is like wonderful. we have a And small request on behalf of our community. Since you said sure, that the portal launch will be done soon, who better to do the portal launch than Mr. Anil Reddy himself? Can we have a round of applause for our portal launch? Anil Reddy sir खुद करेंगे. definitely. So, okay, should I share the screen? Yes, sir. Please do that so that our audience can see it. Okay, I'm new to this tool. I'm just figuring out how can I share the screen. Okay, here it is. Present. Can you see my screen? Yes, sir. So this is the Sandskriti website, which we have been doing for the past couple of months, and we are so glad that Anil Reddy sir ने हमारे ये website launch करने में पूरी हमारी encouragement की है. Can we have a huge round of applause for Mr. Anil Reddy? Once again, our website is finally live. You can now connect with us at any point of time. So, sir, one last question I have for you before you go off to your celebratory mode. अगर आपको ये डिजाइनर कम्युनिटी को कोई एक पीस ऑफ एडवाइस देना हो तो वो क्या होगा? संस्कृति को एक एडवाइस अगर आपको देना हो. Design, right, is not a career, is not a job. Design is a lifestyle. Design is a celebration. This is my 23rd year in this domain, and there's a lot of ups and downs, but I loved each and every minute, each and every hour that I spent, and I dedicated my life to this. Design is like what guitar is for a guitarist. When he's sad, he'll play guitar. When he's happy, he'll play guitar. When he's on a holiday, he'll carry his guitar and play. My piece of advice to everyone is don't look at design as a career or design to earn money or design to settle down in life. Look at design as a passion. Look at design as your everything. Celebrate design every day. Celebrate bad designs the day when you don't are not good and you produce bad design. Celebrate good designs. Celebrate everything. So design is a celebration. So this is my piece of advice, and please follow it. Every day celebrate design. Thank you so much, sir, for your inspiring words. We hope कि आप जल्दी अहमदाबाद आए और हमसे वर्चुअली नहीं, हमसे सामने आके हमसे मिले, हमसे बातचीत करें and share your inspirational journey once again. Thank you so much. Thank you so much. Are we opening up for questions, or are we? Sorry, sir. Are we opening up for any questions? I'm Of happy. course. I couldn't hear you. I'm So happy to take 2 to 3 There are questions. many people from the tribe that would have certain questions in their mind regarding the design, and
who are starting their career right now or who are in the beginning of their phase. So, anyone from the tribe that would like to ask questions? किसी के पास questions है? If someone wants to talk to Anil Reddy sir in person, he's here, he's ready to give answers. Hello, good evening. I'm Dr. Anil Sinha. Hello, sir. I How are you, share sir? my name with you. Yes. I know It's you, a sir. wonderful, because I was actually waiting for you to be here in person. And I was very excited because yesterday I was talking to my son who is in Bangalore. He said, Papa, Lollipop is a big thing, you know. And even my students have been there in Lollipop as an interns. The only thing what I do is I analyze things. When I was analyzing this Lollipop, it has got both the things. Lollipop vegetarian, Lollipop non-vegetarian. Both is there. So you have captured the entire world with the vegetarian and non-vegetarian both. It's a wonderful thing. And I joined Pramod just because the kind of task which he has taken in his hand, and it's happy to see you even on the screen, but maybe in future we will meet one-to-one. I'm with the GLS Institute of Design. I head that place. Yes, all the best for your future things. Thank Thank you. you, sir. I was so looking forward to meeting you in person, and I was hoping that this time I will travel and meet you in person. It was an honor, sir, to be talking to you, and thank you so much, sir. So, Anyone else? to everyone out there, designers are extremely introvert. Okay, whenever we say, "Do you have any question?" Nobody will ask question, but there is a 1,000 questions running in your head. The first person who will ask me questions will become the best designer. Ask in your own So, language. I can anyone speak any कोई ये language. challenge लेना चाहता है? Okay, we have a hand over there. Can we have the mic to him, please? Yeah, hi Anil sir. Yeah, hello. Yes. What's your name? Hello. Yeah, hi, I'm Dhruval. So yeah, I'm just starting out in my career, and like recently I have gone through the phase when just you said that there are some days when you can't able to put up the good designs, right? And like I certainly googled it and I found out it is a called some kind of creative block. So I just want to know, like at that stage you are so like you having at that stage you just still feel that type of creative block, and like if you feel so, like how do you deal with that and how you can come out of that. So if you can just tell me some incident or anything on that, so it will be helpful. Thank you. Good question. Creative block is something that you will always have, no matter how experienced you are. This is like a cold and cough. No matter how fit you are, you will always attract a little bit of a cold cough and a sore throat. And there is no solution to the creative block. Creativity is very subjective, right? Creativity is not something like every day you're going to come up with something new. Even good musicians sometimes score bad music, and there are good times, there are not so good times, right? So when you hit the creative block, please find your own way of coming out of it. Everybody has their own style. There's no global way of coming out of the creative block. Like for example, so many people in the crowd, we all go have our own cold and cough. There is not one medicine that works. For some, homemade medicine works. For some, English medicine works. Some homeopathy or Ayurvedic works. Creative block is very similar. When you hit that, figure out what you should be doing. What I do is I go for a good run. I don't sit and stress myself to create designs. I take a break and get out of it and do something else that is not related to design. So when I do that, that gives me a little bit of a space and breathing room for me to come back and design something. So I give a good 2 to 3 hours of gap, either watch a movie, go out for a run, or do something that is not related to what I'm doing. If I continue to do it, I'll end up doing repeating the same thing. So I try to avoid that. So figure out your own way. Creative block is exactly like a cold and cough. We all have our own ways of doing it. Some people accept it and give it time to get over it. Some people find a figure out how their body responds to it. So figure out how your mind responds to a creative block. And this is something, no matter how many years of experience you have, you will still face this. Even I still face it today.
but I have my own way of recovering fast. Thank you, sir. So I have been told that no matter who asks questions, I should be in that list. So we have with us Mr. Pramod Sinha. He would like to ask you some questions. Thank you, Anil sir. आपने हमें join किया. So basically, you already indicated like how strong India is in design space, but we don't have that specific belief system in us. So the whole purpose of Sandskriti is to bring that belief system within the designer, so basically they can empower themselves. And you have given a great input on that particular direction, and thank you so much for that. Right, and you have already positioned like Ahmedabad is one of the design, space where we can grow much more faster compared to any other cities, because we have all good institutions here in Ahmedabad. So if Ahmedabad has so much of good thing, why not you have a lollipop design studio in Ahmedabad, sir? When you are going to open a lollipop design studio here? Very soon. The answer is very soon. We actually thought about it when we were working with a client, and the client actually pushed us and also encouraged us to sponsor and fund to open a studio there. But it all depends on who supports and who backs up. Sir, So we, Sanskrit is there to support you, sir. There are 200, 300 people there. They are going to support you. Support करोगे ना? Very good. Sir, आपको खोलना ही पड़ेगा, sir, अब तो. definitely. Thank you This so is my much. promise. Thank This is my promise, and we'll open good 50 to 60 people team in Ahmedabad. Thank you. Thank you so much. Good initiative, sir. Thanks. Thank you, sir, for your inspiring insights. I think we are done with the audience questions for now, because we have with us Mr. Anil Sinha, Mr. Neeraj Bhatgujar, and Mr. Dharmesh Acharya as our guest as well, and the media personnel are really, really eager to meet them. So can we have the correspondents, please, those who want to come and talk to us over here? Also, it's an open forum for the media as well. If they want to ask a question to Mr. Anil Reddy, they can go ahead and do that as well. कोई अगर पूछना चाहता है Mr. Anil Reddy sir को, तो आप पूछ सकते हो. You're from the media. Just I'll come back. Media. Can I have a show of hands if any correspondents from the media house wants to talk to Mr. Anil Reddy? Great. Thank you so much, sir. Thank you very much, and have fun. Show of hands, This is हाथ दिखा दीजिए भाई. डायरेक्ट बाइट ले लेंगे. कितने जो डिजाइनर हैं वो यहाँ पर अभी आए हुए हैं, कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है? ये हमने कम्युनिटी अभी जस्ट हमने स्टार्ट किया है, और ये जो कम्युनिटी है वो वी हैव जस्ट स्टार्टेड 2 months बैक, एंड वी हैव अराउंड 350 people who are already registered as a tribe. ठीक है, we call them tribe, we don't call them like attendees and things like that. We all are together. We have online tribe which is of strength of 1,000 people, and physically from Ahmedabad 350 people are there approximately, and we think कि वो कम टाइम में जिस हिसाब से हमें रिस्पांस मिल रहा है, जिस हिसाब से रेड्डी सर जुड़े हैं, अनिल सिन्हा सर जुड़े हैं, एंड पुलिस फोर्स के तरफ से सर भी आए हैं, नीरज सर, सबको मोटिवेट करने के लिए, ये बताने के लिए कि डिजाइन की वैल्यू क्या है इस स्पेस में, राइट? तो ये रियलाइजेशन कराना हमें ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे अनिल रेड्डी सर ने कहा कि इंडिया को आईटी हब की तरीके से देखा जाता है, लेकिन इंडिया के पास दूसरा स्ट्रेंथ है, वो डिजाइन हब.
हम चाहते हैं कि हम सब डिजाइनर साथ में आए और एक साथ मिलके कुछ ऐसा क्रिएट करें जिसे इंडिया भी डिजाइन हब की तरीके से जाना जाए। हमें मालूम है इंडिया में कि हमारे में वो स्ट्रेंथ है, लेकिन वो स्ट्रेंथ हमें पूरी दुनिया को दिखाना है। इसी अप्रोच के साथ हमने ये संस्कृति को स्टार्ट किया है। अनिल रेड्डी सर का Great. So Hello, Design Tribe. Thank you so much for joining. And as you can see, several guests and several amazing designers are with us. And we can see Dr. Anil Sinha giving an exclusive interview to prestigious, esteemed media personnel. Everyone wants to hear his amazing opinions, his experienced perspectives. अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें भेज सकते हैं और and we'll be super glad, we'll be super excited to send them to Dr. Anil Sinha sir, Mr. Anil Reddy sir, Mr. Neeraj Badgujar sir and Mr. Pramod Sinha sir. हमारे एक्सपर्ट्स जो है उनको एक्सक्लूसिवली कवरेज करने के लिए अभी मीडिया आए हुए हैं। Super excited. To see them grow. We want to see this designers learn and move ahead amazingly well in their careers. Same goes for you. अगर आपने ऑनलाइन भी ज्वाइन किया है then you are not a part of us. का इवेंट है। ये सारे डिज़ाइनर, सारे क्रिएटिव लोगों का इवेंट है। मीटअप इनफैक्ट मीटअप में हमारे साथ आप सब जुड़े हैं। वी आर सुपर ग्रेटफुल, वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। वी कैन hear Dr. Anil Sinha for this moment, but I'm sure he's sharing amazing perspective. Media personnel basically are asking him how important is experience when it comes to design, and he's sharing his amazing insights, his superb perspectives with the media people, with great correspondence from all across India. You'll definitely get detailed videos, the detailed answers in upcoming weeks, in upcoming days from Sandcup as well as Sandskriti. So kindly follow Sandskriti on LinkedIn as well as Instagram. हमारे साथ जॉइन कीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत फ़न होने वाला है, बहुत सारा सीखना है, राइट? लाइफ़ जो है वो डिज़ाइन के बिना अधूरी है, लाइफ़ आर्ट के बिना अधूरी है, लाइफ़ फ़न के बिना अधूरी है और वही डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा फ़न और बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल बनाने के लिए संस्कृति है आपके साथ, आपकी कम्युनिटी, डिज़ाइनर्स की कम्युनिटी। आप हमारे साथ जुड़े हो, वी आर सुपर ग्रेटफुल। आप सब लोग अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। वी हैव रिसीव्ड सम ग्रेट क्वेश्चन बाय द वे फ्रॉम मुनीर अहमद, जिन्होंने पूछा था कि एआई का क्या इम्पैक्ट होने वाला है, एंड वी कन्वेड दैट टू मिस्टर अनिल रेड्डी सर, और अनिल रेड्डी सर ने उनका बहुत ही बढ़िया आंसर दिया कि
AI can never replace the human emotions. जो ह्यूमन टच है, जो ह्यूमन कनेक्ट है, वो AI को कभी भी उनसे आगे नहीं जाने देगा. एक इंसान जो फील कर सकता है, जो कन्वे कर सकता है, वो कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकती. वो सोच सकती है, वो लिख सकती है, वो डिज़ाइन भी कर सकती है, पर वो फील नहीं कर सकती. और जब तक आप फील नहीं करोगे आपके यूज़र्स के प्रॉब्लम्स को, तब तक आप कैसे उनसे कनेक्ट करोगे? तब तक आप कैसे उनके प्रॉब्लम सॉल्व करोगे? AI को काम करने के लिए, as Mr. Anil said rightly, you need to give great prompts, and even after that, AI cannot feel it. AI cannot solve the actual problems. AI cannot empathize with humans. Empathy is what lies at the core of design. Without empathy, you cannot design. And to empathize, you need to be a human. You need to be a live, amazing person. You need to feel the pain of your users. You need to feel the happiness of your users when they use your products. जब तक आप वो फील नहीं करते हो, जब तक आप वो नहीं अचीव करते हो, तब तक काम करने का फील क्या है, तब तक काम करने का मीनिंग क्या है, तब तक काम करने का इम्पैक्ट क्या है. तो ऑफ कोर्स यू शुड यूज ऑल द AI tools, but always remember that you are the one who is in charge. You are the one who is controlling AI. AI कभी आपको कंट्रोल नहीं कर सकता. That was an amazing answer by Mr. Anil Reddy sir. Uh, Thank you Mr. Hardik Panchal for joining with us. हम लिंक जो है आपको तुरंत ही शेयर कर देंगे. As you can see, you can join our community on Discord. It's a very open platform. It's a platform where every designer from all over the world can join. They can share their problems, they can share their challenges, they can share their ideas with fellow designers. वहाँ पर आके हम सब लोग साथ में मिलके वो प्रॉब्लम्स की बातें करते हैं, डिज़ाइन की बातें करते हैं. एंड दैट इज़ द थीम, डिज़ाइन की बातें, बस और कुछ नहीं. कोई भी विदाउट एनी अल्टीरियर मोटिव, विदाउट एनी अदर इंटेंशन हम लोग Okay, डिज़ाइन so की बातें कर रहे हैं. it was lovely having Mr. Anil Reddy with us. But now for the hello. Now for the men of the occasion over here, we have with us Dr. Anil Sinha, the director of GLSID, a man who's done everything, a man with over 49 years of experience. Can we have a huge round of applause for Anil Sinha, sir? Sir, if you could stand up, and ma'am, if you could give him a token of our appreciation. ये हमारे तरफ से छोटा सा एक तोहफा है सर. Can we have a huge round of applause please यार, come on. More claps, please. Also, we have a very special support system over here. Dharmesh sir, who's supported us throughout our journey in the designer meetup. So can we have a huge round of applause for Dharmesh sir? And ये है हमारे तरफ से छोटा सा एक तोहफा. ये जो पूरा स्पेस आप देख रहे हो, ये रेडिक्स वेब की स्पेस है. उन्होंने हमें ये डिज़ाइन कम्युनिटी बनाने के लिए पूरा स्पेस के लिए कंट्रीब्यूट किया है. सिर्फ खाली स्पेस नहीं, वो उन्होंने पूरे रेडिक्स के कई वॉलंटियर्स आपको दिखेंगे. दे ऑल आर हियर टू सपोर्ट यू. दे आर टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. थोड़ा सा chaos हुआ था इन बिटवीन, बट everything is managed by Redix team and our team together. So thank you so much, sir, for giving such. Once again, I would like to welcome all of you to Sandskriti and Redix. Event like this are very critical for community growth. It allows you to learn and inspire from what others and the community globally is doing. And I guess Ahmedabad needs more such encouragement. Thank you for coming up in such a weather. So big round of applause for all of you to attending this as well. And promote good work. Keep it up. Thank you so much.
And we have with us a very special guest over here, a man who's a problem solver. वो खुद problem solve करते हैं अपने तरीके से. Can we have a huge round of applause for Mr. Neeraj Bhattgujar, sir? Sir, if we could have this. और जोर से यार, come on. It's our privilege कि ये लोग अपने टाइम में टाइम निकाल के यहाँ पे आ रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं. That's a huge success for Sandskriti. और एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगा कि संस्कृति का दरवाजा सबके लिए खुला है. So with that being said, these people have made it possible for this event to happen, and उनके लिए और एक बार क्यूमुलेटिवली हम हाथ ताली बजाएंगे जोर से. अरे मैडम, आप कौन है? अरे मुझे तो लगा ये कोई कैफे है. नहीं है, ये कोई कैफे नहीं है. हाँ, कैफे ही है. मेरी तो डेट है आज. मैं इस डेट के लिए इस कैफे पे आई हूँ. ठीक है मैम, अब बैठिए, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ. अरे यार, इनके डेट को बुलाओ. डेट? वैसे मैंने ब्लाइंड डेटिंग का भी ट्राई नहीं किया है, मगर साउंड्स एक्साइटिंग. मेरा जो डेट है वो एक्चुअली अभी थोड़े ही टाइम में आता होगा, लेकिन मैं जल्दी आ गई. ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, यू सी. Hey, Pushti, hi. Just a second, phone आ. हेलो. हाँ राहुल. अच्छा देखो यार, देखो कल रात को बहुत ज़्यादा पी ली थी भाई. इतना मत पिलाया करो. बहुत घर पे यार डांट वांट पड़ती है भाई. क्या कर रहे हो? अच्छा लेकिन सुनो, बहुत सीरियस बात करनी है, ठीक है? ध्यान से सुनना. तुम्हारा करियर इस पे डिपेंड कर सकता है, ठीक है? हाँ, तो यू आर फायर्ड. ओके, ठीक है? हाँ मतलब ओके, ठीक है. थैंक यू. हाय पुष्टि, हाउ आर यू? हेलो. प्लीज बी कंफर्टेबल. हाँ, मैं कंफर्टेबल ही हूँ. अच्छा नहीं, वो आपका आज पहला दिन है ना काम पर, तो सबकी थोड़ी पट जाती है. कोई दिक्कत नहीं, आप कंफर्टेबल हो जाइए. काम? कौन सा काम? अरे आपका काम. अच्छा सॉरी, वो थोड़ा आदत से मजबूर हूँ ना, इसीलिए. आप एचआर हो क्या? क्या कहा आपने? HR. आई एम द एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिव. ओके. मतलब आप ई हो? वो विद्या बालन को भी 3 बार एंटरटेनमेंट चाहिए था, तो मैं 4 बार ले रहा हूँ. क्या दिक्कत? एनीवेज, वैसे ई से याद आया, आपकी इस मीटिंग से एक्सपेक्टेशंस क्या क्या हैं? वाह, ये लाइन तो बम्बल और इंटरव्यूज दोनों में चल सकती है. यू गॉट जोक्स, हाँ? वैसे ऑफिस आवर्स में आप डेट पे कैसे आई हैं? अरे छुट्टी यार, ली है आपने? वो तो पोर्टफोलियो मैंने कहाँ है आपका? वो तो मैंने बस ऑफिस में यही बता दिया कि मेरा कोई रिश्तेदार बीमार है और उसका ख्याल रखने मुझे यहाँ आना पड़ा और मैं तुमसे मिलने आ गई. तुमने मुझसे मिलने के लिए ऑफिस से छुट्टी ली? तुमने मुझ एक छुट्टी क्या छुट्टी ली है? क्राइम, क्रिमिनल हो तुम. तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कंपनियों को कितना घाटा सहना पड़ता है? तुम जानती हो तुम्हारी वजह से कितना नुकसान होता है कंपनियों को? शेम ऑन यू. अरे भाई, तुम क्यों ट्रिगर हो रहे हो? यार हूं मैं HR यार. पर अच्छा वैसे सुनो ना, एक बात कहनी थी. क्या तुम उन लोगों में से हो जो लंच जब जाते हैं तो Get out of here. अरे ब्रेक डालते हो कि नहीं तुम? Get out of नहीं. here. सी
वाओ, लगता है योर मीटिंग वाज प्रिपोस्टरस। इडियट्स। शांत हो जाओ। टेल मी व्हाट हैपेंड। अरे यार ये डेटिंग वगैरह बहुत डिफिकल्ट है यार। हाँ यार, डिफिकल्ट तो है। वैसे तुम करती क्या हो? मैं यूआई यूएक्स डिजाइनर हूँ। अरे वो तो दुनिया के लिए पुष्टि, बट व्हाट अबाउट योर आत्मतुष्टि? मैं यूआई यूएक्स डिजाइनर हूँ। ओह, और तुम क्या करते हो? वैसे तो दुनिया के लिए मैं कंटेंट लिखता हूँ। और आत्मतुष्टि के लिए लोगों को जज करते हो? एक जजमेंट पास करूं? एक डिजाइनर और राइटर की जोड़ी चाहे तो कयामत ला सकती है। मैंने मेरे लाइफ में एक भी ऐसा राइटर नहीं देखा जो मेरी बातें सुनता हो। जब भी कुछ बोलने जाऊं हर टाइम मुझे जो भी मैं कहना चाहूं बर्बाद करे अल्फाज मेरे, अल्फाज मेरे। और जब कुछ बोलने नहीं ओ होता ये तो ऐसे ही हवा में बातें करते ओ हैं। ये सॉरी, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया। वैसे हम तो डेट पे आए, झगड़ा क्यों कर रहे हैं? आई एम सॉरी, आई जस्ट फील लाइक नोबडी अंडरस्टैंड्स डिजाइनर्स। देखो, अपने आप को सिर्फ डिजाइनर मत बोलो। तुम्हारा वजूद सिर्फ तुम्हारे काम नहीं है, ये पूंजीवाद के प्रकोप का प्रभाव है। ये दुनिया चाहती है कि हम काम करते रहे और काम से ही अपनी पहचान बनाए। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये चाहती है कि हम अलग रहे, हम यूनाइट कभी ना हो, हमारी कम्युनिटी कभी ना बने, लेकिन हमें इनका मुकाबला करना होगा। एक एक हेलो, हाँ सर, हाँ हाँ, यूनाइटेड या नो नो, मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत गया सर। हाँ सर। क्या सर, बेटी का बर्थडे? क्या बात है। हाँ हाँ, अभी भेजता हूँ कैप्शन लिख के। हाँ हाँ, अरे सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं, स्नैपचैट पे भी डाल दीजिएगा, आजकल बहुत चल रहा है। बेटी जी खुश हो जाएगी। जी जी सर। हाँ हाँ ओके। अरे पैसों की क्या बात है सर, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, बस वो पेटीएम कर दीजिएगा। हाँ हाँ, गूगल पे भी चलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ तो हम, आई थिंक आई शुड सी माई सेल्फ आउट। अरे ओ पूंजीवाद के प्रकोप, अपना थैला तो लेके जाओ। थैंक यू सो मच, ये तो मेरी जान है। और इसीलिए मैं आपकी जान नहीं बन सकती। वो कैप्शन भेज दिया है सर। इनके वजह से मैंने एक कॉफी तक ऑर्डर नहीं की है। लेकिन ये तो मैंने ऑर्डर नहीं किया। हाँ मुझे पता है, लेकिन मैंने आपको देखा तब आप फोन लेके एक ब्राउनी का आपने पिक्चर लिया। ब्राउनी भी आ रहा है, मैंने बोल दिया है। ब्राउनी का पिक्चर लिया, शायद आपने किसी को व्हाट्सएप में भी भेजा था, उसका शायद एक फनी रिप्लाई भी आया होगा, तो आपने मुस्कुराया। और कॉफी तो इट्स ऑन द हाउस। ये सब नमूने से मिलकर सर दर्द तो होने वाला है, तो इसलिए मैं कॉफी लेके आ गया। वाह, इतना कुछ नोटिस कर लिया। डिजाइनर हो क्या? फिलहाल तो नहीं हूँ, लेकिन संस्कृति एकेडमी से बन जाऊंगा एक दिन। पुष्टि है, पुष्टि, ये यू लुक गॉर्जियस टुडे। बट यहाँ के वेटर्स बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं है। अरे तुम डेवलपर हो क्या? इतना ऑब्वियस है क्या? नहीं, वो तो मैंने बस ऐसे ही देख के गेस कर लिया। अरे बड़ा तेज दिमाग है तुम्हारा। वैसे करती क्या हो तुम? मैं यूआई यूएक्स डिजाइनर हूँ। ओह, अरे डेवलपर डिजाइनर, अरे क्या जोड़ी बनाई है ये, क्या कॉम्प्लीमेंट्री काम है। इट्स लाइक ए कंप्लीट यू। देखो, आई हैव हैड अ लॉन्ग डे। क्या हम काम की बातें अवॉइड करके करते कॉफी ऑर्डर कर सकते हैं? करते बिल्कुल। साथ में करते हैं। साथ में करना। अरे यही तो बोलता हूँ, अजाइल और लीन को साथ में यूज करके डिजाइन और डेवलपमेंट साथ हो सकता है। नहीं, आ जाते हो मुंह उठा के, फेंक देते हो मुंह पे डिजाइन, ओके तो बना लो। अरे पूछो तो सही, होता ही नहीं होता।
अरे ओ, सब पता है तुम्हारा पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। जब कुछ आता नहीं हो तब पॉसिबल नहीं है, जब आलस आ रही हो तब पॉसिबल नहीं है। अरे यही होता है, डिजाइनर्स और डेवलपर साथ में, नहीं नहीं ये जोड़ी नहीं जमेगी। अनरिस्पॉन्सिव। मैम ये लीजिए आपका कॉफी, फिर से मैं रिफिल करके लाया हूँ इसको देखने के बाद। नहीं यार, मेरी तो एपेटाइट चली गई। Doesn't even care about my feelings. हाँ हाँ, औकात ही नहीं है डिजाइनर हूँ design- ना। और मैं रेस्पॉन्सिव हूँ। एक जोक सुनेंगी मैडम? जरूर। आप तो डिजाइनर हो, तो आपके लिए ब्लाइंड डेटिंग कैसे हो सकता है? तो ये तो आपके लिए एक्सेसिबिलिटी डेटिंग है ना? हाँ, हंसो प्लीज। वैसे तुम इसके बाद क्या कर रहे हो? तुम्हारी शिफ्ट कब खत्म हो रही है? हो गई अभी, इसी वक्त। Can you come and create a mood board with me? देखिए मैडम, आप अपसेट लग रही है। मैं आपको दो चीज बताना चाहूंगा। डिजाइनर के लाइफ में तो रीइटरेशंस आते रहेंगे, है ना? तो रीइटरेशंस जब होंगे उसमें से ही निखर के एक खूबसूरत सा रिजल्ट आएगा। और रही बात डिजाइनर की, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी एक कम्युनिटी होनी चाहिए जहां पे एक घर वाली फीलिंग हो, जहां पे लोग अपने लगे, जहां पे मैं कुछ स्टार्ट करूं और सामने वाला उसे खत्म करे। तो तो मैं क्या बोल रहा था? नहीं, मुझे एक सवाल तो एड्रेस करना ही है। डिजाइनर्स जो होते हैं ना, मुझे लगता है कि जब भी उनको मौका मिलता है कि बाहर जाके काम करे, वो भाग जाते हैं, देश के लिए कुछ नहीं करता। आपको क्या लगता है? नहीं लक्ष्मण, सब देश छोड़ के नहीं भागते। अरे तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? अगर भागते तो हमारे चीफ गेस्ट ने क्यों नहीं सोचा, इसलिए इन्होंने देश में रह के यहाँ सेवा करना सोचा। So guys, can we please have a round of applause for our people who had a play? तो सिर्फ हमारे एक्टर्स ही नहीं, जिनमें काफी सारे मिसपरसेप्शंस थे, हमारे पास आपकी तरफ से भी काफी क्वेश्चंस आए और मुझे लगता है कि ये एड्रेस करना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है, ये तो मैं सीधा दिल पे आके लगी मेरी, ये मैं पूछना चाहूंगा। तो द क्वेश्चन, द मिथ और द ट्रूथ, नाउ यू हैव टू डिसाइड। तुम्हें सोचना पड़ेगा। ओनली अ डिजाइनर कैन गिव अनदर डिजाइनर सम काइंड ऑफ फीडबैक। मैं तो सर के विचार सुनना चाहूंगा। Myth. Because see, the actual user, if your design will go to the user, they will give you the best feedback. Either it's accepted or rejected, and that's the feedback which we all look for. सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? That is exactly true, because if designer does not take the feedback, how they will grow? So designer take the feedback, then they will give the feedback, button idhar kar do, udhar kidhar kar do. You know, this kind of feedback normally, designers talk. But when it comes to real problem solving, we need to take the feedback from the real audience so that they are able to, solve the real issues through the design. So we have to open for the feedback from every mean possible. Then only we are a true designer from my perspective. Great, we have some clarity. Anyone who opposes this view? कोई ये oppose करता है, लड़ाई हो जाएगी ऐसा लगता है। लड़ाई नहीं होगी, great. Because why debate when you can collaborate and create, right? दूसरा question. Can we have the second myth, please? Collaboration is good, but one person must have the final say. सारे एक साथ काम करेंगे, वो ठीक है,
लेकिन एक बंदे को डिसीजन लेना है, एक किसी को डिसीजन लेना है. Is that okay? Is that the truth or is that the myth? Anyone from the audience who would like to answer? Love to hear your perspectives. Yes, एक हाथ मिल गया. Yeah, it's a truth because after some time there must be someone who stop. Like design as a designer, we usually don't stop. So like we need a person who stops us. Like तो creativity stop होनी चाहिए एक जगह. एक किसी को बोलना होगा कि यहाँ पे एंड करते हैं, ऐसा कुछ बोलना. एज अ सॉल्यूशन लाइक हम लोग बहुत कुछ बना सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन को एक जगह पे कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा, अदरवाइज हम बनाते रह जाएंगे. Great. Anyone else? Yeah, we have one more. Can we have your? Oh, your name, ma'am? Mansi here. Yeah, I think this is a myth. There should not be a one person, but there should be a full stop in the process for a design. Let's say if we are building a product, and if business wants that we should not consider users in some of the use cases, then I feel there should be a full stop in the process of iterating it. Not a one person should have the final, call of taking the decisions. I feel as a team you should decide, but there should be a stop in the process. कोई और कुछ बोलना चाहेगा? If someone wants to add to her answer, कोई उसको oppose करना चाहेगा? The floor is open, guys. We just need to get their names. That Yeah, girl her and- name, Yeah. ma'am, your name is Mansi, right? कोई लिख लो उनका नाम. Yeah. और सर आपका नाम प्लीज. Okay, great. मेरे मुंह पे पसीना आ रहा है, बहुत दौड़ा भागी कर लिया, लेकिन ये जो मुंह है इनके मुंह पे पसीना नहीं आ रहा है, क्योंकि ये काफ़ी लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़ वाले मुंह है. तो अगर आपको टाइम मिलता है इसके बाद, मैं तो करूँगा ही घटिया ड्राइंग, आप आके अच्छा वाला कर लेना, ताकि मेरे वाले के बाजू में रखेंगे तो एक बैलेंस बनेगा. और बैलेंस है अनिल सिन्हा सर का फेवरेट वर्ड. सर अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे बैलेंस को लेकर. बैलेंस मुझे लगा कि अच्छा कोलैबोरेशन पे बात कर दूं थोड़ा. उसमें I approached an institute and talked about, okay, can we have the collaboration? What he said, no, you are a private one and we are the government one. There's no possibility of any collaboration. I said, then you will have to go for the alternative. Either you collaborate or you compete. So today, the designers are ready to compete with each other and not collaborate with each other. So if you are working for a particular cause, you can collaborate. But if you are with a different cause, different organization, collaboration is a bit difficult. But different mindset can come together and create wonders. So that's a working together. It's not a collaboration. That's what Mansi, I think, partly right. Not everything will have a right and wrong. There are some midways are also there. Huh? ठीक है यार, इतना भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे. अब क्या नाम ही भूल गया. इसने बोला कि बैठ जाइए, तो मैंने बोला कि इतनी भी कोई दिक्कत नहीं है. तो was it a myth or a truth? It's in between. So always there is a word in design which is called optimization. Find the middle path. I don't agree that in collaboration somebody will say his word will be final. Then the collaboration has gone completely one-sided. That's not right. Okay, अभी मुझे क्या बताना है? कुछ पूछना है? कुछ? आपका जो बैलेंस का जो पर्सपेक्टिव है वो हमें दे दीजिए. Oh, अच्छा, it's you. वो तो काफी मजेदार. तो सर ने बैलेंस का इतना अच्छा एग्जांपल हमें पहले इंटरेक्शन में दिया है, एंड दैट्स द रीजन ही हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन, क्योंकि इस बैलेंस से बेटर मेरे ख्याल से कोई और इतना अच्छा डेफिनेशन वो दे पाए अनिल सिन्हा सर के अलावा कोई नहीं है. I had a discussion with sir for more than 2 hours on this particular topic, and you don't believe that was like mind blowing.
we'll talk about that later on, पर सर एक छोटे से कक्स में आप क्या कैसे बताएंगे कि बैलेंस कैसे हो सकता है डिजाइन में? बैलेंस बहुत तरह के होते हैं. There are variety of balances there. It's not only one balance. But one thing that day when we were talking together, what I do is I pick up the words. I do the analysis. You must have noticed it when I was talking about the lollipop. Similarly, I talked about the sand cup. Sand in our culture, भाई ये बालू की जैसा है, उसको हाथ में पकड़ नहीं सकते हो. सैंड मतलब बालू. तो लेकिन एक तरफ उसकी नेगेटिव है तो दूसरी तरफ उसकी पॉजिटिव है. सैंड के लिए ये कहते हैं कि इट विल गेट हीटेड इमीडिएटली एंड बाय नाइट इट विल गेट कोल्ड. सो दैट हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. सो वी हैव टू ऑलवेज टेक द पॉजिटिव वन. That's one thing which is very, very important to strike a balance in your life. Balance can be achieved through many ways. It's one of the way is the unity. But what we appreciate, what we accept, what we get delighted with is the imbalance, not the balance. अजंता की सारी मूर्तियां जो है ना सब इनबैलेंस है, किसी में भी बैलेंस नहीं है. इवन हड़प्पा की बात हम लोगों ने की, हड़प्पा की डांसिंग गर्ल जो है उसके भी इनबैलेंस है. हर जगह जहां की बैलेंस को डिस्टोर्ट करते हैं, यू विल गेट ए प्लेस फॉर योरसेल्फ. लेकिन अगर बैलेंस देखना है तो आप समझने के लिए फॉर स्टूडेंट्स इज द विजुअल बैलेंस, एक्चुअल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, कॉन्सेप्चुअल बैलेंस, रिलेशनल बैलेंस. There are many types of balances there. So balance is again a contextual things. You will have to strike the balance between the visual and understanding and analysis, and you can find that balance. Like जो सबसे बड़ा example देते हैं लोग yin yang का, तो you can prove that it's not balance, it's a balance, it's harmony, it's a rhythm, everything is there in one. So that's a balance between the fundamentals of design is the yin yang. So if you think of that, one side is black, other side is white, but with one dot that has been balanced. So to balance something, that is a visual balance. That is not actual balance. That is not actual balance. When we see the tree has bent down to one side, but still you will perceive that as a balance because it's standing upright. That's our nature's connect, and that's how we perceive the balance in the vertical position. Balance is better perceived in the vertical position than the horizontal. Horizontal will be mirror, horizontal will be reflection. The balance is always perceived in the vertical axis. So whenever you are trying to perceive the balance, make it vertical and see it. Have I answered? Thank you, sir. Thank you so much for your inspirational insights. तो सर ने बैलेंस की बात मुझसे जब किया था तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि ये हम साथ मिलके कर सकते हैं. तो आपके किट में एक सांस्कृतिक किट में एक प्रॉम्प्ट डाला है हमने, एंड सबको अलग अलग प्रॉम्प्ट मिला है. द प्रॉम्प्ट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज, एंड all of those categories combine to create the balance of the cosmos. And there are 5 elements added with instructions कि आपको क्या करना है, डूडल करना है. बेसिकली आप जो मीटअप में देख रहे हो कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से, let us know if you would like to share your creative thoughts with us in a form of a doodle or a sketch, and we are going to keep that as a prized possession. उसको हम वो समझिए कि वो आपके तरफ से हमारे लिए एक तोहफा है, your precious artwork. Devo, just a second. I would like to invite Mr. DA sir to please come on the stage. Yes sir, please. And Mr. Pramod Sinha, please join on the stage. Can we have a huge round of applause for everyone who's on stage today? So we will have the conversation with DA sir and Pramod sir as well. So what are their perspectives in terms of business and software companies and the design studios? Because we are the 3 legendary on the stage. So have a huge round of applause, guys. Hip hip hooray. मैं एक पोजीशनिंग करता हूँ. ये सारी जो बातें हो रही है मैं खड़ा हो जाता हूँ, मजा नहीं आता मुझे. ठीक है,
तो यहाँ पे लिखा है डिजाइन की बातें, और हम यहाँ पे सिर्फ डिजाइन की बातें करने आए हैं, ठीक है। नाउ अभी तक जो आपने देखा था वो अभी तक तो हमने शो स्टार्ट किया है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रियल कन्वर्जेशन विथ ऑल आवर डेलीगेट्स, ठीक है। डिजाइन की बातों में सबसे पहले वी वांट टू हैव डीए सर हियर, धर्मेश आचार्य सर। Hi. जो Thank you. ये प्लेस उनकी है, यस प्लीज। उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, और हमेशा से एक चीज देखने में मिलती है कि एक बार मतलब जैसे भी एक्ट में भी देखा था, डिजाइनर और डेवलपर की लड़ाई होती रहती है, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट कंपनी चलाते हैं और मैं डिजाइन कंपनी चलाता हूँ, अगर कोई लड़ाई हो जाए तो भैया हैंडल कर लेना। सर भी मेरे साथ है। या सो हाउ यू वांट टू स्टार्ट, यू कैन आस्क क्वेश्चन एंड देन वी स्टार्ट, और हाउ यू गोना गो अहेड विद इट। ऑफ कोर्स सर। सो डीए सर, पहले तो मैं आपसे जो पूछना चाहूंगा कि संस्कृति की जो पूरी कम्युनिटी है यहाँ पे बैठी है, दे हैव कम इन नंबर्स, आपको कैसे लग रहा है एक ऐसे वाइब्रेंट कम्युनिटी को देख के? Very excited. I must once again affirm our commitment and what Sandskriti is committed to do for the industry as a design. We really need a strong reform in overall our culture, mindset. What Mr. Anil from Bangalore said, that you should not be doing this just to earn your bread and butter. You anyway are going to do when you are in IT. This should be more of your passion, and I think event like this ignites that passion to the next level. So it's great start. Thank you, sir. Thank you so much. Without your Thank you. support and encouragement, nothing would have been possible. Beena ma'am, you had a question for Mr. Pramod Sinha, our very own Pramod sir. Yes, I have a question. Why you came across to launch this Sandskriti as a community? What is your perspective for the designers community to share? Okay, so Sandskriti, I think you know already like what we are doing from a big, outer perspective, ठीक है। आपको मालूम है कि बाहर के लेवल में हिंदी में बोलता हूँ, आई थिंक दैट विल मच बेटर इन ए वे। सो जो संस्कृति है उसके बारे में हमने थोड़ा बात तो ऑलरेडी कर दिया, लेकिन मैं आपको एक खाली एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ अच्छे से, so that we all understand Sandskriti, so you will become part of it in a much more deeper way, अच्छे से आप कनेक्ट हो सकते हो। तो संस्कृति एक इनिशिएटिव है, वो एक मूवमेंट है, लाइक वी आर टेकिंग एन इनिशिएटिव जहाँ पे हम डिजाइनर को एम्पावर करना चाहते हैं। डिजाइनर को एम्पावर क्यों करना चाहते हैं, उसके पीछे भी एक पर्पस है। सो यू गाइज आर नॉट जस्ट सिटिंग टू लिसन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, यू गाइज आर हियर टू लिसन टू थिंग्स विच इज इंपॉर्टेंट फॉर डिजाइनर। हम यहाँ पे किसी कोई डिजाइनर बनाने के लिए कोई ट्रेनिंग सेशन नहीं कर रहे, हम यहाँ पे ये बताने के लिए खड़े हैं कि डिजाइनर कितने इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर स्पेस में, और वो कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं पूरे इंडस्ट्री में। हमेशा से मतलब मैंने डिजाइन स्टूडियो स्टार्ट किया था, लाइक इट वाज माय विश कि हम डिजाइन के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व करें। सो उस चीज को चेस करते करते वी केम आउट विद संस्कृति, एंड विद अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, एंड एवरी प्लेस वेयर वी गो, वी टॉक विद पीपल, we find there is a lot of information, or maybe not a lot of knowledge basically is needed by the designer is looking for. So Sanskriti is a movement where we want to empower you. We are going to do a lot of different kind of activities. This is just one meetup, but ये meetup एक basically कोई event नहीं है। ये आपको हम इसको event की तरह run नहीं करना चाहते। No doubt we have made the stage, but to be very honest, we don't want to make the stage. स्टेज हमें इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हियर, तो आपको दिखे। अदरवाइज वी थिंक कि हमें 1-to-1 बात करनी चाहिए, हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, एक डिजाइन को नेक्स्ट लेवल पे इंडिया में को प्रमोट करना चाहिए और ले जाना चाहिए। इसलिए हमने ये कम्युनिटी बनाई है, एंड थैंक्स फॉर बिकम पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, बिकॉज यू हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस नून टाइम। अगेन इट्स अ हॉट एनवायरनमेंट एंड यू आर सिटिंग हियर एंड लिसनिंग टू अस। लेकिन यही एक चीज है जो इंसान को ड्राइव करता है। आप मानोगे नहीं, हमारी पूरी टीम 3 दिन से सोई नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको इतना एनर्जी दिख रहा है, आप सोचो कि कहाँ से एनर्जी आ रही है। आपके वाइब्रेशंस है जो हमें मिल रहे हैं, और हमें अच्छा लग रहा है कि वी आर डूइंग समथिंग फॉर डिजाइनर, एंड दैट इज द ओनली मोटिवेशन वी हैव, एंड वी रियली वांट टू मूव फॉरवर्ड इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, एंड वी नीड योर सपोर्ट 100% ऑन इट। उसके बिना ये कम्युनिटी बनेगा नहीं। दिस इज नॉट ए कम्युनिटी फॉर
2, 3, 4, 5 people or a group of people. This is a community of yours. This is your community. That's the reason you are wearing this t-shirt. You know, this t-shirt, this is not just a t-shirt. It's a communication that we are doing with you, that now you are part of our community. We'll take the design to a next level, and that's the whole purpose of Sandskriti. Thank you, sir. सर सॉरी आई डू हैव वन मोर क्वेश्चन. यहाँ पे जितने भी डिजाइनर्स हैं वो मैक्सिमम, जैसे अनिल सर ने सबसे पहले कहा कि वो इंट्रोवर्ट होते हैं, तो अनिल सर आपका क्या सजेशन है कि डिजाइनर्स का जो वैल्यू है वो कैसे बढ़ेगा? आपका कुछ सजेशन है उनको एक करियर का डायरेक्शन देने के लिए? देन प्लीज गो अहेड. वो समय चला गया जब आप गुफाओं में बैठ करके और ध्यान और तपस्या करते थे और लोग पहुंच जाते थे. Today you will have to talk what you are and what difference you can make to the society and how you are active. So there is nothing wrong in telling that how good you are. So speak freely. I don't hesitate. जहाँ बोलना है. लेकिन the only thing is, because the other day I was talking somewhere and I said there should be 4 C's for the designer, design teacher, design practitioner. That 4 C's are, the first C is the character. The second C is the commitment. The third C is the capability. So if you have all these 3 C's, the fourth C, which is confidence, which is bound to come. So follow these 3 C's and the confidence will come. If the confidence is there, you will not hesitate in speaking what you are doing. So that's what my suggestion for all the young designers. Be committed. Okay. I'm sorry. Do I need to repeat? Was sir audible? Huh? Yeah. Great. Okay. Okay. Next time I'll care for it. Great. I have a question for DA sir. So as we know that India is already a tech hub, right? So a company which is an IT services company has already taken that journey, and India is right now a tech hub. What should we do to make India a design hub as well? Because you have that experience, why don't you share your experience with us? Certainly. So, as you all know, we started as a technology company, but design was always in our backyard from day one because people wanted to design web page. And though we did not have a separate designation and term UI UX was not coined, it was always demanded, obviously, that my users are not able to use this or that. Today, the way everyone is using most popular apps, for example, Instagram, Google, Myntra, the end user's expectation is at par today. So it does not matter now what person consumes, whether he goes to particular store, they have seen all the branded stores like CCD or Starbucks, everywhere you see user experience and design is at the forefront. So no matter what kind of services we design in the back end, it is going to be experienced through the design communication we put forward to the user. A great apps fails, great technology company cannot survive without having a right user experience and design. And another advice I would want to give is, like Mr. Anil said from the Bangalore, that he learned coding. And a lot of designers, sometimes they want to categorize themselves only into creative zone. Now, what happens is if you are going to paint on a material and you don't know the touch and feel of that material, you cannot paint it. Similarly, when you are creating something for users, be it mobile device or smart wearable devices, you need to understand that technology so you can put your design ideas more effectively. So I would encourage all of you to get some deeper understanding of the technology where your design is going to finally deployed and taste it yourself, basically. And that creates a great deliverable
I think Pramod has started a very right movement that wherever you go, you are called as a, oh, Indian guy, you must be a software developer. And this happens with me all the time when we are traveling abroad, when we are meeting our customers. And the same should happen for the design community as well. We have strong, talented people, but we need to create that level of delivery and experience in everyday work, basically. It should not be uh, ask, it should be your passion to deliver something which becomes your signature. uh, and that would become India's signature, basically. Thank you, sir. Thank you so much. So, So I just wanted to add something to it Yeah, because sure, sure. we are friends. We know Great. each other for 20 years and we debate a lot for many different things together for business and then many other things, right? So you have indicated very correctly that the design is in the right position in this world. This is not happened before. जैसे अनिल सिन्हा सर ने बोला था कि भाई to 15 साल पहले 10 साल पहले whatever the number is at that time design does not have that kind of exposure. It does not mean that it does not have value is there at that time also. एक्सपोजर नहीं था. अभी डिजाइन को जो एक्सपोजर मिल रहा है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले अगर कोई पोजीशन कर सकता है तो ऐसा नहीं कि कोई ऐसी कंट्री है जिसको डिजाइन हब की तरीके से जाना रहता है. देयर इज नो कंट्री एज सच. देयर आर फ्यू कंट्रीज विच आर लाइक गुड इन डिजाइन. अच्छे है वो डिजाइन में लेकिन कोई हब नहीं है. इंडिया के पास अकेला वो पावर हाउस है. अगर हम सब चाहे तो मिल के अपनी कंट्री को डिजाइन हब बना सकते हैं. ठीक है. और अनिल रेड्डी सर भी वही कर रहे हैं. उन्होंने तो हमसे ज्यादा स्ट्रगल किया होगा उस टाइम से लेके आके यहाँ तक करना. अनिल सिन्हा सर एजुकेशन सेक्टर में है. वो कंटिन्यूअसली एजुकेशन सेक्टर में लोगों को नर्चर कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं. हम तो डिजाइन बनाते हैं, ये इंसान बनाते हैं और ये डिजाइनर बनाते हैं. मतलब हम तो बोलते हैं कि डिजाइन का डेफिनेशन क्या है. इनसे पूछो तो वो बताएंगे डिजाइनर का डेफिनेशन क्या है. क्योंकि हमें डिजाइन बनाने के लिए डिजाइनर बनना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ ना तो बोलो यार. हाँ, डिजाइनर बनना पड़ेगा तो गुरु के पास आना पड़ेगा. तो हमारे पास हमारे गुरुजी हैं. आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि गुरुजी से आप क्या लोगे. गुरुजी यही है लेकिन गुरु के पास जाना पड़ता है. गुरु आएगा नहीं सामने से. सो वी वांट एवरीवन टू आस्क एवरी क्वेश्चन दैट यू हैव इन योर माइंड. इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क इट. If you really want to have some approach that you want to discuss, you can discuss it. But in this particular meetup, there are multiple the knowledge and other things will be continuous after the event also. हम आपको अपडेट करेंगे उसके बारे में. इसलिए हमने इसका नाम रखा है डिजाइन की बातें. द होल थिंग इज दैट हमको डिजाइन की बातें करनी. तो कोई भी टॉपिक हम डिस्कस करें हमें मेक श्योर करना चाहिए कि भाई हम डिजाइन की बातें करेंगे कि दूसरे भी जो डिजाइनर्स हैं हमारे साथ, जो क्रिएटिव लोग हैं हमारे साथ, उनको कुछ नॉलेज मिले. सो सर आपके लिए एक छोटा सा सवाल है मेरे साइड से. मेरा खुद का सवाल है टू बी वेरी ऑनेस्ट. डिजाइन का डेफिनेशन बहुत अच्छे से हम दे देते हैं क्योंकि थियोरेटिकली पता है और कंसेप्चुअली भी पता है. लेकिन डिजाइनर का डेफिनेशन क्या है? लाइक हु आर डिजाइनर? लाइक हाउ आई कैन से दैट आई एम डिजाइनर? बिकॉज देयर आर मल्टीपल डेफिनेशन ऑफ डिजाइन. सो व्हाट इज द सिंगल डेफिनेशन ऑफ डिजाइनर? कैन यू गिव सम आइडिया ऑन इट सर प्लीज? I'll say because design was even before the anything else. Design was there with us from the very beginning, and that's how whenever we give the example of Harappan period, it was all well designed. तो अगर डिजाइनर डिफिनेशन पूछ रहे हैं तो ओनली वन डिफिनेशन, बी ह्यूमन. अगर इंसान हो तो डिजाइनर हो, इंसान नहीं हो तो डिजाइन नहीं है. वही इंसान होते हैं लेकिन अगर उनमें इंसानियत नहीं है, जिसको आज हम एम्पैथी कहते हैं, इंसानियत को ही एम्पैथी के नाम दिया जाता है. इंसानियत होनी बहुत जरूरी है. जैसे ये मुझे ऐसे ही बोल रहे हैं वैसे मैं भी किसी को ऐसे ही बोला करता था कि आप मेरे गुरु हैं. उनको मैं एकलव्य की तरह से उनसे सीखा है मैंने. जी सर. और मैंने उनको बोला कि सर आपसे मैं फॉर्म करेक्शन तो सीख गया, आपके काम देख देख के, अप्रोच देख देख के मैंने आइडिएशन सीख लिया, लेकिन जिस दिन आपके जैसा एक अच्छा इंसान बन जाऊंगा उस दिन मैं डिजाइनर अच्छा बन जाऊंगा. मैं रेफर कर रहा हूं
सुदर्शन धीर साहब का. धीर साहब का नाम आपने सबने सुना होगा. सुदर्शन धीर, who is no more now. He was very good friend of mine because once I designed the identity for Gujarat High Court, he called me from Bombay. अनिल तुमने क्या किया है यार, सब लोग बात कर रहे हैं उसकी. Because till then all the high courts were having only balance और पट्टी बना दिया और कुछ वो लकड़ा लगा दिया. But first time somebody has visualized the High Court in a very different way. I'm sure you all must have seen the High Court of Gujarat's identity. आते जाते रास्ते में हाई कोर्ट दिखता है और वहाँ आइडेंटिटी जो है वो मेरे क्रिएट हुई है. तो एम्पैथी इसलिए बोल रहा हूँ कि you will have to connect things. And that is why my definition of design is all about connecting and relating. Culture connects, tradition conform, and technology empower. So we have to take that route to become a good designer. You have to have a good understanding of your culture, your people, your surroundings, and as rightly said by both the side, it's the technology. Today, I have managed my life without technology empowerment because I'm good with the drawing. I've got many awards in the drawing competitions and all. But today's kids, they don't have the time to learn the drawing. They can improve the drawing, they are finding it difficult to learn the drawing. क्योंकि वो patience नहीं है, वो time नहीं है, वो perception नहीं है. So improve your perception, get into the relation with the project which you are doing, and then you can be a good designer or good human being. So only thing is be observer and perceive the things, analyze the things and create things, and you will be a good designer. Am I right? राइट सर. आपके साथ तो मैं हमेशा सीखता ही रहता हूँ. आप जो भी बोलते हैं मैं वो सुनता रहता हूँ. बस मुझे अच्छा लगता है सुनना. और आप जो बोलते हो वो सही में ऐसा लगता है कि वी आर टेकिंग अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ एवरीथिंग एल्स. यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट design, we talk about Figma, we talk about this, that, you know, a lot of jargons are there. But we never see design from the root level. You know, when I talk to him, like he always give a definition of anything that you want. You know, आपको कोई भी सवाल होगा सर 100% ऐसा जवाब देंगे, आपका दिमाग घूम जाएगा. और वो रूट लेवल पे आंसर देता है. अगर आप रूट लेवल को समझ सकते हो, आप डिजाइनर हो, तो शायद ये आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है. एंड आई रियली love to learn from you every time when I interact, and I am still learning from you, sir. आप मेरे गुरु हो और गुरु ही रहोगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैंने तो मान लिया है, अभी आप सिखाते रहे हमें. अभी अनिल सिन्हा सर के बारे में जितना बोलो उतना कम है, राइट. मैं चाहता हूँ कि डेबो भी थोड़ा सा अनिल सिन्हा सर के बारे में बताएं. आपको एक ग्लिम्स तो मिल गया होगा कि उनकी सोच कैसी है, उनका अप्रोच कैसा है. आप उनके बारे में थोड़ा जानिए, एंड देन वी स्टार्ट द राउंड. तो अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है भाई साहब, अभी स्टार्ट होने वाला है. इट्स जस्ट अ वार्मिंग सेशन दैट वी आर डूइंग. There are a lot of things we are going to discuss in this event because we have spent a lot of time. You have spent your time. Let's take it forward now. Right. Now on to you. And now you can ask the question and we Great. answer it. So, हर एक मोमेंट जो मैं अनिल सिन्हा सर के साथ बिताता हूँ, इट्स लाइक एवरीथिंग ही सेज इज अ कोट. कोई भी कुछ बोलते हैं दैट बिकम सो मैजिकल टू मी कि मैं वो भूल नहीं पाता. तो उनका जर्नी स्टार्ट हुआ 1973 में, इफ आई एम राइट. And he has been involved in design for 49-50 years now. So a man who has been in design for 50 years, उन्होंने सब कुछ देख लिया, evolution, origin सब देख लिया. लेकिन मैं उनके बारे में जो बोलना चाहूंगा कि उन्होंने क्या क्या हमारे देश के लिए किया है. He has been involved with the DRDO. He has been very vocal about the power and of culture and community. उन्होंने अहमदाबाद में डिजाइन फेस्टिवल जो किया था, उन्होंने शुरू किया था. अभी वो डायरेक्टर है GLSID में, वो काफी सारे फ्यूचर डिजाइनर्स को सिखा रहे हैं. हमने जैसे संस्कृति एकेडमी बना के का बहुत सारे लोगों को सिखाया है. एंड आवर जर्नीज आर वेरी सिमिलर. एंड टू टेक इट टू अनदर पॉइंट, दैट वो जो बोलते हैं वो नेशनल इंपॉर्टेंस को वो बहुत मद्देनजर रखते हुए काम करते हैं. उन्होंने राज्यसभा और DRDO के लिए काम किया है, जैसे मैंने बोला है. और उन्होंने एक जॉइन आवर ट्रेल कह के एक वैल्यू लेटर का भी फाउंडेशन किया है, जहां पे प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन एजुकेशन को वो बढ़ावा देते हैं. एंड कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अ मैन हु हैज डन एवरीथिंग फॉर डिजाइन. प्लीज गिव इट अप फॉर डॉक्टर अनिल सिन्हा, प्लीज.
अब मैं धर्मेश सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ सर आपका तो खैर हम लोग इंट्रोडक्शन दे ही नहीं सकते, मतलब we are just trying to express what you have done. You have done a lot of things for this industry and doing it for 50 years is like, मतलब हम तो सोच ही नहीं सकते 50 years तक हम कैसे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, लेकिन आपने तो किया है। अभी तो सर आप तो करते ही रहेंगे सर, आप दिल से डिजाइनर हो, आप डिजाइनर ही हो सर, तो वो तो करना ही है। मैं तो चाहता हूँ कि सर आप बस हमें संस्कृति को आप गाइड करते रहें, हमें एक अप्रोच देते रहें कंटिन्यूअस बेसिस पे, ठीक है? तो एटलीस्ट वी लर्न फ्रॉम यू एवरी टाइम व्हेन वी इंटरेक्ट, राइट? एंड मैं संस्कृति का पार्ट हूँ, मुझे कुछ ना किसी की परमिशन लेनी है ना कहीं प्रमोशन देना है। आई एम पार्ट ऑफ संस्कृति, सो वी ऑल आर टुगेदर, नॉट टू वरी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ग्रेट, थैंक यू सर। ये बहुत मायने रखता है हमारे लिए कि आप आज आके आपने ये इतने बड़े शब्द कहे हमारे लिए। तो धर्मेश सर आप आपके लिए हमारे पास सिर्फ प्यार है, क्योंकि आपने आज जो कम्युनिटी को सपोर्ट दिखाया है उसको हम संस्कृति ट्राइब कभी नहीं भूलेगा। सो let the audience know a little bit about yourself and your journey in this sphere. Can we share something? Sure. Please? Thank you for mentioning it, but like I said, when Pramod came to me about this event, I said, come see my space and you have all the support. And not for this event, Redix is making this infrastructure available to any IT related this size of event which contributes to community, and we are not charging anything for this kind of event. We started around 99 with the web design and hosting, and in those years, like a lot of you may not have been born in that year, but we had very challenging time when the IT was not popular, work was not in demand, but eventually we hang in there, and from there, from handful people, today we have grown to 750 plus people, and we are still growing thanks to people like you who are part of our company and who has been contributing. During the journey, design was also very important part, and you can see that design language also reflects throughout this building when you came in or you walk through the different segment of this office. And we try to make it more comfortable for everyone who comes and work here. And again, here, see, we are again talking design, because design, setting up a building was not infrastructure. It was to create a people-centric place, which, everyone can enjoy, people, be productive, be happy when they are working around, or they could chill out, basically. So design has played vital role in our growth also. Of course, we don't sell design primarily. We sell more of a technology, but we still have a lot of designer openings, by the way. So demand is always there. All I'm trying to tell you is, regardless of the sector we are in, that is always there. Thank you, thank Thank you. you. Thank you so much, Dharmesh. Dharmesh bhai has made, I don't know how many projects, probably more than 5,000 projects. There is no count on it. So when we do 1 or 2 or 3 projects and we say, अरे यार मैं तो professional बन गया, प्रोफेशनल बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, एक्सपीरियंस मतलब नंबर ऑफ ईयर्स से एक्सपीरियंस नहीं आता है। बेसिकली एक्सपीरियंस आता है किस टाइप के प्रोजेक्ट को आप कर रहे हो, किस बंदों के साथ वो प्रोजेक्ट कर रहे हो, कैसी टीम है आपकी, टीम कोऑर्डिनेशन आप कैसे करते हो, वो सारी लर्निंग से चीजें क्रिएट होती है, राइट? और डिजाइन ये चीज अच्छे से सिखाता है, और सर ने तो बहुत कुछ किया है। हम चाहते हैं कि आप भी, मतलब अब डिजाइनर बने हो तो डिजाइन को ऐसे छोड़ के निकलना नहीं है। लॉट ऑफ पीपल थिंक कि भाई डिजाइन में करियर नहीं है, डिजाइन पता नहीं चल रहा मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, don't leave the design. If you are into design space, give 5 years to yourself, you 100% you get a path where you have to head in design, because design में बहुत सारे wings है. We just talk about UI UX, but UI UX is not only design. There are a lot of wings are there in design. You have to find where you can do best. जैसे इनका बेस्ट है टेक्नोलॉजी में बेस्ट कर रहे हैं,
आप अपना बेस्ट निकालिए और आप उसमें अपना बेस्ट प्लीज ढूंढिए, उसमें सपोर्ट करने के लिए संस्कृति है, मतलब वी आर टुगेदर। सो डोंट लीव डिजाइन स्पेस इफ यू थिंक यू आर a designer, and continue with this part and in your journey, and we all will definitely support you on it. Thank you sir, आपसे बहुत कुछ सीखेंगे हम। Thank you. Thank you so much, sir. और अब can we have a huge round of applause for him first, Mr. Pramod Sinha. Without him, nothing would have been possible. He had a vision, उनके पास एक आइडिया था, उन्होंने हमको कन्वे किया और तभी संस्कृति का जन्म हुआ। आप लोग की वजह से हुआ, आपने नाम रखा, but he has been behind everything. After 25 years in the industry, he still has the drive to create something uncreated, and that is what Mr. Pramod Sinha is about. सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे संस्कृति के बारे में और कैसे उसकी शुरुआत मुझे हुई? पूरे इवेंट में बोलते ही रहना है यार, मैं बोलते रहूंगा, डोंट वरी, ठीक है। The whole idea of making this event, you all know, I'm not going to talk about it, ठीक है। So ये सारा जो संस्कृति स्टार्ट जो हुआ है वो हमने स्टार्ट नहीं किया, you know, whatever is, I am just helping in one way or another way, ठीक। स्टार्ट आपने किया है, हमने एक मीटअप किया था, डिजाइनर मीटअप 1.0। 99% of the people has said that we need designer meetup 2.0, 99%। And then we have decided कि अगर ये requirement आ रही है, लोग मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, collaborate करना चाहते हैं, एक दूसरे को जानना चाहते हैं, so why not, you know, we come up with designer meetup 2.0, and that's the whole way that started. designer meetup 1.0 में हमने नाम दिया था संस्कृति, हमारे दिमाग में एक नाम था, पर हमने अप्रूवल आपसे लिया कि यार संस्कृति नाम कैसा लग रहा है, can we go with that? And this is a name given by you, you have approved it, and this is your space now, you know. And in this particular session, again, I am saying that, you know, you never get an opportunity like that where you can clarify your questions. Please ask, please ask. If you don't ask, you can't grow, you know, in this space. You know, the asking question is the best thing that you can do. Anil sir ने भी यही बताया, right? हमें ये करना है, ठीक है, ठीक है। और जैसे सर ने बोला, please ask. We'll open the floor to any questions if we have for Mr. Anil Sinha or Mr. Pramod Sinha. Do we have questions from the audience? I have a question if the audience doesn't want to open up right now. Sir, आपके लिए एक क्वेश्चन था मेरा, वो है कि आपने जब शुरुआत किया था डिजाइन में तो काफी सारे रोड ब्लॉक्स आपने फेस किए होंगे जो शायद आज के डिजाइनर्स नहीं फेस कर रहे हैं। तो उस जमाने में और अभी के जमाने में रोड ब्लॉक्स में डिफरेंस क्या है, आप अगर बताना चाहेंगे। फिर से ब्लॉक आ गया। ये ब्लॉक है ना, इतना बड़ा ब्लॉक है कि समझो मत कि एक्चुअली ब्लॉक है ही नहीं। सर अच्छे से समझाएंगे, मैं खाली एक अप्रोच दे रहा हूँ कि ब्लॉक है ही नहीं, ये यहाँ पे है ब्लॉक। देयर इज नो ब्लॉक एज सच। वी थिंक देयर इज अ ब्लॉक एंड यू सी द ब्लॉक, डोंट थिंक देयर इज अ ब्लॉक। मेरा पर्सपेक्टिव है। सर प्लीज आप तो डिटेल में समझाएंगे। उसके पहले इतना ही बोलूं, क्यूरियोसिटी इज द कोर ऑफ एनी क्रिएटिविटी, सो बी क्यूरियस। अगर किसी के पास कोई सवाल नहीं है, इसका मतलब कि कहीं तो वी आर मिसिंग समथिंग, वी आर मिसिंग समथिंग। सवाल तो होने ही चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसका मतलब कि आज हम भी क्लास जब लेते हैं तो पूछते हैं किसी को कुछ पूछना है, नहीं पूछना है, क्योंकि दे ऑल थिंक दैट कि दे विल सर्च ऑन द गूगल एंड दे विल गेट द आंसर, बट द गूगल विल ओनली गिव व्हाटएवर हैज बीन फेड इन इट। दैट्स वेयर द टेक्नोलॉजी इज, यू नो। तो सवाल जरूर करें जहां भी जाएं। अब इनका सवाल है कि ब्लॉक ना क्या है यार। हाँ सर, तो आपके करियर में पहले क्या क्या चैलेंजेस थे उन जमाने में जो इन जमाने के जो डिजाइनर्स हैं उनमें नहीं है, और उस चैलेंज में क्या डिफरेंस है? नहीं नहीं, चैलेंज हमेशा ही रहा है। चैलेंज नहीं रहेगा तो क्रिएट नहीं करेंगे आप। जब से इंसान बना है तब से उसके पास में चैलेंज रहा, उस चैलेंज को सॉल्व किया है उसने क्रिएटिवली। जब सबसे शुरू में कम्युनिकेशन वाज ए प्रॉब्लम, देन दे हैव टेकन द विजुअल रूट व्हिच वाज बाय द केप पेंटिंग एंड ऑल दैट। दैट्स हाउ दे स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग, यू नो। सबसे पहले इंसान जो अपने आप आग लग जाती थी उससे डरता था, तो आग को उसने बस में किया। फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो, और उस लकड़ी काटने के चक्कर में व्हील का इन्वेंट हो गया। वैसे ही जब बारिश आई तो उसमें भीगने लगे तो केप के अंदर घुस गया। तो और
जब ठंड लगी तो कपड़े नहीं थे उस समय, तो उन लोगों ने पत्ते बांध लिए। तो इंसान के लाइफ में जब जब प्रॉब्लम आए हैं, जब जब चैलेंजेस आए हैं, उसको सॉल्व किया है। ऐसा नहीं है कि हमारे समय में प्रॉब्लम ज़्यादा थे और आज के समय में प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हर ज़माने में प्रॉब्लम होते हैं और जो प्रॉब्लम फेस करता है उस वही सॉल्व कर सकता है। लेकिन एक ब्लॉक की बात करते हैं, जो प्रमोद ने भी मुझसे पहले बात किया था ब्लॉक का। आई डोंट बिलीव इन द ब्लॉकेज एंड ऑल। दिल में ब्लॉकेज नहीं होगा तो दिमाग में ब्लॉकेज होने का कारण नहीं है। ओपन योर हार्ट and you will see that you will get the root of the problem solving things. So इतने कहना ये चाह रहा हूं मैं कि ऐसे भी कहावत है ना कि there is a solution of the problem in the problem itself. आप प्रॉब्लम को जड़ तक जाइए, उसके बेस में जाइए और उसके रूट को डिवाइड कीजिए। इसी तरह से मैं जब क्लास में सिखाता हूं तो ऑल डिफरेंट अप्रोचेज आर देयर। द 5 का अपने लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंस है। 5 एलिमेंट्स जो कहते हैं ना, डिजाइन में भी 5 एलिमेंट्स है यार। यू नो, पीपल, you take the root of the people, you will get the answer of your problem. You know, take the root of your place, you will get the answer of your problem. Take the root of the process, you will get the answer of your problem. Take the root of a price, you will get the answer of your problem. So all these 5 P's, which is very, very important for designers to understand, that the people, product, आप प्रोडक्ट ले लीजिए, उसको एनालाइज कीजिए, उसका प्रोसेसिंग कीजिए, यू विल गेट द आंसर वेयर इज द प्रॉब्लम। तो जब तक कि उसको एनालाइज नहीं करेंगे, प्रोसेस नहीं करेंगे, यू विल नॉट गेट द आंसर। और जब प्रोसेस करेंगे तो उसके एक रास्ते नहीं होंगे, 5 रास्ता तो मैंने ही बता दिया आपको। उन 5, अगर एक रास्ता फेल हुआ तो गो टू द अदर रूट, गो टू द थर्ड रूट, फोर्थ रूट। सपोज इफ आई टेक एज a people Pramod here. Pramod is a person. So there is a visual appearance, there is a physical appearance, there is a conceptual appearance of the Pramod, there is a work which he is doing, that appearance is in Ahmedabad, that's another route. So I'll go on getting one particular person and have many routes for him. So all that route will give me one way to solve the problem. So try to define that route and you will have n number of problem solving approach. The only thing you have to select which one will work, which one will not work. So do the things, process your problem with the people, with the product, with the place, with the price, and you will get the answer accordingly. And that will solve your problem. So with this approach, you will never get into the block. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. So we like it. Huh? Sir. Of course, great words. Blockage क्या आता है? One question that everyone asks, like when we take a lot of interview, people ask a lot of questions to us also. तो एक क्वेश्चन जो सब नॉर्मली पूछते हैं, जैसे एक तो करियर रिलेटेड है, वी ऑल नो देयर इज अ ह्यूज करियर इन डिजाइन, वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट इट। मतलब एक क्वेश्चन होता है जैसे क्रिएटिव ब्लॉक तो ठीक है, बट जैसे अलग अलग एक्सपीरियंस के डिजाइनर्स के हम इंटरव्यू लेते हैं और हर एक एक्सपीरियंस के डिजाइनर का जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो हमें हर क्या कहते हैं इसको, ग्रुप में, व्हेन वी डिवाइड इनटू ग्रुप, लेट्स से कि 1 साल वाले, 2 साल वाले, 5 साल वाले, वैसे तो मैं बिलीव नहीं करता कि नंबर ऑफ एक्सपीरियंस इज बेसिकली डिफर ऑन इट, बट इनके जो नंबर ऑफ एक्सपीरियंस इन टर्म्स में कैसे होता है कि क्योंकि अगर जो 10 साल पुराना एक्सपीरियंस है उसकी एक अपनी 10 साल पुरानी माइंडसेट है, राइट? जो अभी यंग बच्चे हैं उनका एक अलग माइंडसेट है। There are a lot of different mindset are there in design, right? Designers. So ये differences को कैसे हम मैच कर सकते हैं? Because we see there is a huge gap, right? कि यंग बंदों का एक डिफरेंट अप्रोच से वो अभी स्टार्ट कर रहे हैं डिजाइन, उनको अलग टेक्नोलॉजी मिली है स्टार्ट करने के लिए। जो पुराने लोग थे उन्होंने मैनुअल प्रोसेस से डिजाइन स्टार्ट किया। सो एवरी टाइम व्हेन आई इंटरेक्ट विद पीपल वी फील देयर इज अ डिफरेंसेस एंड दे हैव डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सारे डिजाइनर्स आपस में डिस्कस करें, बातें करेंगे तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। पर आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि इस टाइप के गैप को हम फुलफिल कर सकें? जस्ट गिव सम आइडिया ऑन इट। There are few of my students are here. I don't think there is any gap. I don't agree with you, the gap and all. There is no gap. It's only the technology is varying. And see, each one of us should ask the problem which we are facing.
because many a times it has happened. My students have come to me, and I allow my students to come to my office in my cabin also to actually ask the problem which they are facing, and I solve it with the drawing. Because I always keep a set of tracing paper. I have made a book of tracing paper on which I do the drawing. Whatever problem they will come, I'll try and correct it there. But at the same time, I ask them, यार तुम्हें तो मैंने सिखा दिया, इस फाइल को मैं डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ, इसको करके दिखा दो. So we have to learn from each other, and that's the only route that will actually remove this gap. To me, there is no gap, because from the very beginning, I'm in the same field. After my schooling, I joined the Fine Arts College, Patna. The Patna, and I did a research on in search of cultural symbols of Bihar. So for 5 years, I traveled village to village in Bihar. And that has given me the root of how the design has appeared. और किसी ने बोला था कि डिजाइन का फ्यूचर क्या है, ये वो सब. जब तक इंसान है, डिजाइन है. जब इंसान आया था तब से डिजाइन शुरू हुआ. जब इंसान चला जाएगा तो डिजाइन खत्म हो जाएगा. ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए. डिजाइन रहेगा और डिजाइन ही आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. ये मैं मानता हूँ और समझता भी हूँ. और शायद इसको कंफर्म किया है. अभी कुछ दिन पहले तक मैं विष्णु पुराण देख रहा था. विष्णु पुराण के एपिसोड सारे देख डाले हमने. अभी शिव पुराण पे चल रहा हूँ. विष्णु पुराण में एक बहुत अच्छी सी बात ये बताया कि धरती पे बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगे, तो क्या किया उन्होंने, उठा के पूरी धरती को पानी के अंदर डुबा करके निकाल दिया. साफ हो गया. जब डिजाइन का भी अंत आएगा तो सारी धरती पानी के अंदर चली जाएगी, फिर डिजाइन ही निकालेगा उसको. सो नथिंग टू वरी अबाउट इट. कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है. थैंक यू सर. तो सर की बात से तो ये तो क्लियर हो गया कि हमें आपस में सिंक में रहना पड़ेगा. अगर हम डिजाइनर रियली ग्रो करना चाहते हैं तो हमें आपस में कनेक्टेड रहना होगा, एक दूसरे से सीखते रहना पड़ेगा. एंड दैट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ डिजाइनर. यू नो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एटीट्यूड, दिस एटीट्यूड एवरी डिजाइनर शुड कैरी एवरी टाइम. यू नो, ये एक एटीट्यूड सर से सीखने मिला, उसके लिए थैंक यू सो मच सर. बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं ना, दे विल विटनेस इट. यहाँ पे जो वॉलंटियर हैं हमारे सैंड कप स्टूडियो से, जो बच्चे हैं, वो कई बच्चे इनके साथ ट्रेंड हुए हैं. यू नो, दे आर लाइक वेरी स्मॉल, दे हैव जस्ट स्टार्टेड द करियर एंड दे आर मैनेजिंग दिस होल इवेंट. यू नो, यू कैन अंडरस्टैंड कि उन्होंने इनसे कितना डाउनलोड किया होगा. आप लोग भी डाउनलोड करो प्लीज. तो यहाँ पे कोई हाथ उठा रहा था, सर के लिए क्वेश्चन था, आप थे. हेलो सर. जहाँ मैंने एक प्रॉब्लम फेस की है, जहाँ से मैं हूँ राजकोट से आया हूँ. वहाँ पे मैंने ये देखा है कि जो कोई भी डिजाइनिंग में जॉब कर रहा है, लाइक अगर ग्राफिक डिजाइन, यूआई यूएक्स डिजाइन, व्हाटएवर, अगर उन लोगों का पर्सपेक्टिव व्यू एक ही होता है कि अगर तुम यूआई यूएक्स डिजाइन हो, तुमको वर्क लाइक वो लोग वर्क ग्राफिक डिजाइन का ही देते, लाइक ब्लॉग पोस्ट. ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने फेस की हुई है. वो लोग हायर करते हैं एज अ यूआई यूएक्स डिजाइनर, बट वर्क वो लोग बोलते हैं कि तुम पोस्टर डिजाइन करो, ब्लॉग डिजाइन करो. आई गेस बहुत लोगों ने ये फेस किया होगा. नहीं, वो तालियों से पता चल गया, सब यही फेस कर रहे हैं. नहीं, ठीक है सर, प्लीज गाइड. एकदम आंसर दूंगा. मैं राजकोट को जानता हूँ. आई बीन टू राजकोट. और ये यूआई यूएक्स जो है ना चीज, अपने ऊपर डाला गया है. हम शुरू से वही करते रहे हैं. कौन सा ऐसा चीज है जिसमें इंटरफेस नहीं है? कौन सा ऐसा चीज है जो हमें एक्सपीरियंस नहीं देता है? यू नो, तो फॉर इंटरफेस यू डोंट हैव टू गो क्लोजर टू इट. वी आर इंटरेक्टिंग, so the interface is with the air, so nothing to worry about it. So now you have said that okay, they give the graphic design job. I'm a graphic designer यार. More than that, I'm a designer. क्योंकि मुझे ग्राफिक से अपने को कनेक्ट करके नहीं रखना है. डिजाइन का जो ग्राफिक डिजाइन का जो डेफिनेशन मैंने निकाला है
अपने यूज करता हूँ और अपने बच्चों को बताता हूँ. Graphic design, the graphic word came from the word graphica. There the graphica means the horizontal and the vertical bars to give you the exact coordinate point, and with that you can actually print the things. So वहां से graphica word से आया था. लेकिन graphic का जो हम definition देते हैं, graphic design is a simplification of information for better and effective communication. Do I need to repeat? Have you understood? Okay. So यहाँ पे इतना ही है. हर डिजाइन एक कम्युनिकेट करता है और उसका इंटरफेस कैन बी पेपर, इट कैन बी टेक्नोलॉजी, इट कैन बी प्रोडक्ट, इट कैन बी एनीथिंग इंटरफेस. एंड देयर इज नथिंग इफ वी आर द विजुअली पावर्ड पीपल. सो विजुअल एक्सपीरियंस होने ही वाला है. जहाँ विजुअल एक्सपीरियंस हमारा अगर लाइट ऑफ है तो वन कैन टच इट एंड गेट इट, वन कैन टेस्ट इट एंड गेट इट, एंड दैट्स हाउ द गॉड हैज क्रिएटेड 5 senses. So all these 5 senses to add on to your experience and give you the complete experience. So if one sense is not working, use other sense and get that experience. So nothing to worry about. Whatever work is coming, your work is to solve the problem. And that's how the first definition of design was, to solve the problem. Have I answered your problem? Thank you, sir. So basically, just to, what I understood from it, I just wanted to express in a very little words. So user experience is everywhere. मतलब हर जगह पे यूजर एक्सपीरियंस है. भले आप ग्राफिक डिजाइन करो या कुछ भी आप एक्टिविटी करते हो, यानी कि जो भी आप कर रहे हो, अगर वो कोई प्रॉब्लम को आप डिजाइन से सॉल्व करने की बात कर रहे हो, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एक अप्रोच होना चाहिए. और जब प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आता है तो यूजर एक्सपीरियंस अपने आप उसका पार्ट बन जाता है. Whether you are a graphic designer, whether you are a UI UX is just a term. Don't confuse with that. ग्राफिक डिजाइनर भी UX करता है, और जो अभी आज के दिन में हम जो इंटरफेस डिजाइन करते हैं उसमें भी UX चाहिए. सो एवरी डिजाइनर मस्ट हैव एन एटीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग कि मुझे एक्सपीरियंस अच्छा बनाना है, प्रॉब्लम कुछ भी हो. सो एवरी डिजाइनर शुड हैव एन एटीट्यूड टू सॉल्व द प्रॉब्लम and give a better experience by understanding that problem. That's what I conceive from it. Just to add into experience things, when I was designing the coins, which we are using today, I went to Blind Men Association and they spoke over there. Yeah, I have to design a coin. So how should I go about so that it will be friendly with the visually impaired people? The principal of that place, he said, "Sir, आप सिर्फ ऑब्जर्व करो. कितने लोग ऐसे हैं जो कि मिस्टेक करते हैं, आंखें नहीं है लेकिन मिस्टेक करते हैं कॉइन को यूज करने में, और कितने लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें हैं फिर भी मिस्टेक करते हैं." And to my surprise, none of these blind people will ever make mistakes because they have multiple ways to check it. The weight, the age, the width, material, everything they feel here. So not to worry about the experience. Experience, people will use their experience to judge your solution and accept it or reject it. So experience is not your experience. It's the people's experience with your design that will make you are a better experience design or you are a bad experience design. It's only the acceptance and rejection, nothing else. Yes, sir. Yes, sir. Hello, sir. My name is Maha Krishna, and first of all, thank you so much for coming here and enlighten us and promote sir and Anil sir. And my question is like, what are the top 5 quality we should have as a designer in any form of like graphic, UI, and like, as you said, like problem solving and all, but what are the top quality we should have? अभी 5 क्वालिटी तो सब में नहीं हो सकती है, वो बहुत मुश्किल है, ढूंढना पड़ेगा. मेजॉरिटी मतलब इतनी होनी चाहिए. एवरेज क्वालिटी जो होनी चाहिए. पहले मैं ऐसा कहता हूं कि देयर इज अ डिजाइनर इन एवरीवन. इट मींस हम सब लोग हॉबी की तरह शुरू करते हैं. सब लोग पहले ड्रॉ करते हैं, पेंट करते हैं, और वो हॉबी जो है सो बाद में अपना प्रोफेशन बन जाता है. अब प्रोफेशन बाद में तब सक्सेस होगा जब वो आपका पैशन हो जाएगा. सो बी पैशनेट विथ व्हाट यू आर डूइंग and don't let your hobby die. So hobby को बरकरार रखो और अपने पैशन पे काम करो and you will get the success.
Thank you so much. Thank you so much. Hello, yeah, I am Nikita and I have a question that many times we are not able to design good things like and it will turn out into bad designs. So it leads to imposter syndrome. So what are your views on it and how do you or like how do you suggest to overcome? Come again. Okay. Come again. Okay, I am Nikita and I have a question. Okay, am I audible now? Yeah. I have a question that many times we are not able to come up with good ideas and it might lead to imposter syndrome. So, what are your views on it and how you suggest that we overcome it? Okay, it's like first love, huh? Ideas are always good. How you are developing it? Idea need to be nurtured and developed to make it workable and not workable. So what happens is at the idea stage, if you will start analyzing whether it will work or it will not work, that's not right. Develop the idea to its final form and then decide whether it's working or not working. You know, and koi bhi problem, any problem when it comes, na, immediate, you will get one idea. Don't leave that idea. You know, अब इसमें कहते हैं कि either analogous ideas or digital idea और उसमें फिर हम कहते हैं कि experiential idea और correct idea or fail idea, that's all unnecessary things. One idea will be the final and you develop the alternatives. Alternative हम लोग करते क्या है, एक ही आइडिया को घुमाते रहते हैं, उसके अलग अप्रोच ले लो ना. अब जैसे मैंने 5 डिजाइन की बात की, तो एक में आपने प्रोसेस को अपना कोर बनाया, दूसरे में प्लेस को कोर बना लीजिए, तीसरे में पीपल हु आर यूजिंग इट को कोर बना लीजिए और पीपल हु आर बिहाइंड दैट डेवलपमेंट उनको कोर बना लीजिए और तीसरे में उसका प्राइस जो है उसके हिसाब से एनालाइज कीजिए एंड यू विल गेट 3-4 डिफरेंट आइडियाज. Because whenever even we go to buy a shirt, we look for the alternative. There is a difference between the variation and alternative. शर्ट के ऑल्टरनेटिव टी शर्ट और कुर्ता हो सकता है, लेकिन ब्लू शर्ट का ऑल्टरनेटिव नहीं, वो वेरिएशन है रेड और ग्रीन और ब्लू. तो वहां पे ऑल्टरनेटिव और वेरिएशन में हम मिस्टेक करते हैं, इसलिए हम स्ट्रगल करते हैं. लुक फॉर द ऑल्टरनेटिव आइडियाज and ideas are never wrong. You will have to develop it to the final form and then only it will work. Have I answered? Yeah, and one more thing like imposter syndrome. So, what are views on it? On view, I always work with the intuitive idea. I don't work with the logical idea. So the people apply logic, the logic which you are applying, that she can also apply the same logic, he can also apply the same logic. With that, what will happen is the similar kind of design will start coming. I follow my intuition and then look for the logic behind this, why this intuition has come. If the intuitive idea are logically presented, the people will accept. Is that clear? Yeah. Thank you. Hello. Hi, sir, over here. Yeah, my name is Yaman, and as people say, the design is a subjective thing. Good design for me is the average. I'm sorry. Good design for me is average design for you. So basically, there is a saying that design is not about black and white. It's the gray where magic happens. So what's your thought on this? Black and white. Either it will work or it will not work. Okay. Change your people from whom you are taking the feedback. Cool. Thank you, sir. काम करेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा. टेक्नोलॉजी भी तो फेल हो जाती है ना कभी कभी, तो हम तो नहीं बोलते कि टेक्नोलॉजी ऐसा क्यों है, डिजाइन भी फेल होता है. द फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, यू कैन नॉट मेक एवरीथिंग परफेक्ट एवरी टाइम यू डू समथिंग. इसकी ऑल्टरनेटिव की बात की ना, इनको मैंने 3 डिजाइन तो देने ही होंगे. आज तक मैंने कम से कम कितने डिजाइन किए हैं मुझे याद नहीं है, लेकिन 3 तो देने होंगे ना. See, what happens is the client, they feel happy in rejecting it. So there is a bit of trick in that. I'll give that trick to you.
पहले जब वो आएगा ना क्लाइंट मीटिंग में, तो ही विल कम विद द हेवी हेड that I am going to bombard everything and tear this entire process of creativity and learning apart. ठीक है? So show him the very first one, the one which you want to sell. He will reject it. Okay? Then show him the one which you have rejected. Then he will say, यार इसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं है. He will his उसको ego जो है थोड़ा satisfy होगा. Then show the third one. He will reject. Okay, can I have a look to the first one? And then he will select it. So the idea, generally people make mistake is the idea which they want to sell, that they will keep hiding and so it lasts. नहीं, उसका first ego satisfy करो यार. Let him reject and then he will get back and he will get it. This I have applied and it has happened. Yes, sir. I agree Thank with you, sir. Thank you so much. So you have to make multiple try for the design from a different approach, so you come up with something which is even more meaningful from the previous one. You know, so we have to keep trying to create something better and better. You know, it's just a process. Correct करूँगा. जी sir. And see, the way I have practiced through my institute, you cannot do that way. You know, today I have done almost 4 I am की identity हमने की है. 4. जब न्यूज़पेपर में आता था, the professor has given identity to I am. You know, तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको बार-बार ट्राई करना है. वहाँ पे हमारे साथ में एक एक्सपीरियंस लग गया, एक 40 साल का काम लग गया, हमारी एक बुक है और ये सब बहुत सारी चीजें हैं तो एक्सेप्ट करते हैं. लेकिन एक क्लाइंट था, and I don't consider myself as a failure there, because there are all different kind of people are there. If you will take the brief online, you are bound to fail in giving the solution. Always take the brief in person. When you are taking the brief in person, you will be able to question that person, you will be able to read his mind, you will be able to read his liking and disliking, and then you will be able to solve his problem much faster. एक काम कर रहा था मैं प्रमोद, EPF के लिए, Employees Provident Fund के लिए, and the chairman of the EPF has approved it. I should not use this kind of, I'll not use the name, but it's a learning platform. You can edit it from the, you know? And then, because I can't give the detail of this, but he was going on telling me, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो. हम कहे, सर एक चीज करते हैं, मैंने आपको ये बेस दे दिया, आपको जैसा करना है कर लो, सिर्फ ये मत लिखना कि अनिल सिन्हा ने किया है, बाकी आपका काम है. कंपनी आपकी है, आपके एम्प्लॉय के लिए कर रहे हो, आप कर लो जो चाहिए सो. मैं डिक्टेशन से डिजाइन नहीं करता हूँ, इंट्यूशन से डिजाइन करता हूँ और वैसे ही करूँगा. So never get the dictation यार while designing anything. Use your own intuition, and that intuition, if there is something wrong, go logic, go intuitive, and you will get the things. मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया है कभी, सॉल्व हुए हैं. Agree with you, sir. 100%. So डिजाइन करते हैं, कई सारे ऐसा होता था कि बहुत सारे मीम आते हैं, उसमें ऐसा लिखा होता है कि यार डिजाइनर को इतने फीडबैक मिल गए कि वो डिजाइनर भूल ही गया कि मैं बना क्या रहा था. You know, on that direction there are a lot of memes are there. Yeah, so sometimes you have to do the job, as a professional, but at the same time you have to grow yourself from a design perspective. कोई जरूरी नहीं कि जो मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिला तो मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ. You have enough time in your life to practice yourself. You know, if you want to make something, go ahead and make it. So that is one of the biggest mistake most of the people do. They don't make their own portfolio. They don't create something that they want. अरे कंपनी में जॉब नहीं, मतलब जॉब मिल गया, जो कंपनी बोल रही है वो मैं कर रहा हूँ. अरे वो तुम कर रहे हो कंपनी के लिए कर रहे हो, अपने लिए क्या कर रहे हो? कुछ कर रहे हो तो अपने लिए कुछ करो. डिजाइनर हो तो अपने लिए कुछ करो, पोर्टफोलियो बनाओ, दिखाओ, अपने दूसरे डिजाइनर से फीडबैक लो, दूसरे लोगों को दिखाओ, एक प्रैक्टिस करो कि अच्छा डिजाइनर कैसे हो सकता है. हाउ आई कैन बिकम बेटर एंड बेटर एंड बेटर एवरी टाइम दैट आई डू समथिंग, नॉट फ्रॉम ए डिजाइन पर्सपेक्टिव बट फ्रॉम ए एटीट्यूड पर्सपेक्टिव. ये एक प्रैक्टिस कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर दैट सर. एक डिजाइनर है, अभी नहीं है, बट उसको प्रॉब्लम है थोड़ा. He said, Anil, yaar, I was doing this and I have given them 54 different ideas, but they didn't like it. I said,
whether you were clear what you are designing? Because 3 लोग जो कहते हैं ना आकाश पाताल और पृथ्वी, इसके बाहर से डिजाइन के आइडिया नहीं आते हैं यार। 3 आइडिया से ज्यादा आपको आइडिया आएगा नहीं, उसके बाद आप उसको घिस घिस करोगे, कुछ नहीं मिलेगा उसमें से। क्लाइंट का नहीं आता है यार, बहुत डिजाइन किया हमने, लेकिन 3 से ज्यादा आइडिया नहीं आता है। तब उसमें क्या करते हैं, वेरिएशन करते रहते हैं। हमको लगता है कि हमने नया आइडिया दे दिया, आइडिया 3 ही आएगा, और वो रूट अगर लेंगे तो n नंबर ऑफ वेरिएशन आपको मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन यू शुड बी क्लियर व्हाट यू आर गिविंग टू द क्लाइंट, इट्स नॉट द क्लाइंट शुड बी क्लियर व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। हम जाके थोड़ी डॉक्टर को बोलते हैं कि हम ये दवाई दे दो, हम अपना प्रॉब्लम बताते हैं। वैसे ही क्लाइंट आपके पास अपना प्रॉब्लम लेके आएगा, you give them solution, if acceptable it's fine, if not acceptable go to the other client, forget it. So एक हमारे ट्राइब मेंबर बहुत पेशेंटली खड़े थे, वो आप प्लीज क्वेश्चन पूछ लो। Hello, good evening, sir. I have one question that we are a problem solver, we are a designer, we are a tribe that we have solving the problem everywhere. So could you please share your experience in the way that how you see the thing in a different manner to solve that particular problem? Or how can we improvise, or how can we improve our observation skill in a different manner? अरे यार ये मिथ है कि ट्रूथ है? मेरे हिसाब से ये मिथ है, ये मिथ है कि वी आर प्रॉब्लम सॉल्वर। मैं डिजाइनर मानता हूं अपने आप को, मैं डिजाइनर हूं, आपके प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकता मैं। क्योंकि ये अगर कह रहे हो कि प्रॉब्लम है तभी डिजाइन की जरूरत है, वो गलत है। There are certain things we develop, there is no problem, but we want to give you that kind of life, that kind of masti, and because of that I am creating it. So it's not that problem solving activity is a design, no. Design is to develop and empower and make your life better and better and make you better connected. So design problem solving activity ये पुरानी बात है। हम लोग पहले कहते थे ना कि फॉर्म फॉलोज फंक्शन। मैं कोरिया में था एक प्रेजेंटेशन में, and there the Ikeda, the person's name was Ikeda. He said, Anil, they are all talking nonsense यार। मुझे प्यास लगी है, ग्लास उठाया, पानी पिया, बात खत्म हो गई। Where is the form? Where is the function? It said design is a need-based activity. We try to fulfill your need and not the problem solving. ठीक है? Yes. Thank you, sir. Thank you so much for your questions. Oh, you have a question? Great. और भी है? Hello. Sir, so I'm a little confused since the last hour. I'm unable to understand what discipline of design we're talking about and why we're not talking about users. मैंने सुना client को अच्छा लगना चाहिए, अरे but नहीं, यूजर ही आपका क्लाइंट है यार, और क्लाइंट ही यूजर है। But यूजर से तो काफी बार बात करने को मिलती नहीं है, especially in the world of user experience design, UX UI, right? नहीं, आपको बता दूं मैं, आपका क्लाइंट और यूजर दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। Okay. जो क्लाइंट है वही आपका यूजर भी है, क्योंकि दैट्स द पर्सपेक्टिव ही विल टेक टू जज इट, और कोई कारण नहीं है इसका। और आप खुद भी क्लाइंट हो जिस पे क्रिएट कर रहे हो, खुद भी यूजर हो। कौन सी ऐसी चीज आपने डिजाइन की जिसको कि आपने यूज नहीं किया है? विदाउट यूज आप फाइनल सॉल्यूशन देंगे नहीं। So generally, again, I'm talking about the tech business, right? Where a lot of the products that we design, we generally don't use it. For example, हमने एक product design करी है which is in the marketing automation industry. I don't use it, so I am not even a user. In fact, if I become a user, I'll have my bias. That is exactly why we would do user research, right? नहीं, user is always there when you are designing. You went to the user to check what they will like or what they will not like. Exactly. So that's your survey for what? Yeah, so we would generally talk to the users and then we would essentially tell the client ki this is what the user wants. No, so right? if that is clear to the user, they themselves will design it. But you are understanding their need better and trying to solve it in your own way, which he cannot think. So I cannot go with only user. I'll have to be there inside. You know? I'll have to have my opinion. No, It does not have to I'm be not talking true, about the person with the opinion is not a genuine
analyzer. Okay. Opinionated people will find it difficult to accept any good or bad. So leave that opinion word aside and be honest to the work, and then you will take it. I am unable to understand that. You also use the word that I'm confused. Yeah. I had a student whose name I can say is the Kapil, who was my student in my early days of my teaching experience. He said, "Sir, I'm confused." I said, "Be with that confusion. If you will be with the confusion, you will find your way to reach out or come out from that." So confusion stage is not a bad stage which we want to avoid. It means we are thinking, and that's how we are confused. I'm not getting the direction, so I'm confused. The minute I'll get the direction, I'm clear. Has that given you something? So I'll try to Not the conclude in answer to the different question form. I asked, but yes. Yeah, I'll try to conclude in a different form. I understood what Sir has said. I'm Okay. trying to resolve it, but definitely everyone has their own perspective. So basically, Sir is trying to say that first step you said that कि तुमने कुछ product बनाया and I'm not using it, right? वो तुम एक professionally किसी company के लिए product बनाया, you are not using it, it's your call. But if you are not using it, there is many different possibility why you are not using it. Have you asked the question why I am not using it? Whether I am the user of that particular system or not, whether it is a need of my, it's need for me or not, right? कोई यूजर जब हम कोई सिस्टम बनाते हैं उसके स्पेसिफिक यूजर्स होते हैं. हम सिस्टम की बात कर रहे हैं अभी, हम डिजाइन की बात नहीं कर रहे. डिजाइन से वो सिस्टम को हम और एम्पावर कर सकते हैं क्योंकि वो प्रोसेस है. सर ने बोला कि कुछ प्रोसेस ड्रिवन भी हम डिजाइन अप्रोचेस ले सकते हैं, इंट्यूटिव बेस्ड भी हम डिजाइन अप्रोचेस ले सकते हैं. तो तुमने ये सोचा कि भाई मैं यूज नहीं कर रहा, लेकिन साथ में ये सोचो कि मैं क्यों यूज नहीं कर रहा. हो सकता है जब वो तुमको प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो तुम प्रॉब्लम को जब डिग करोगे थोड़ा सा और डिटेल में, देन यू मे फाइंड द प्रॉब्लम आंसर ऑन दैट प्रोसेस इटसेल्फ. बिकॉज डिजाइन तो एक्सप्लोरेटिव एक्टिविटी है कभी कभी, फॉर स्पेसिफिकली फॉर द टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स. तो उस केस में आई थिंक डेफिनेटली यू हैव टू डीप डाइव and see what is the real reason why you are not using it. First try to understand whether I am user of that particular system or not. If you are not an user, you don't try it. Basically the segment is completely different. So वो आपको थोड़ा डिग करना पड़ेगा. We don't know the real problem statement, that's take long time. But अगर आप अपना real problem statement बताओगे कि ये मेरा system है, हम ये करते हैं. Marketing software, like there are a lot of marketing software are there. You cannot compare yourself with every marketing software and then say कि ये तो ये भी हो जाना चाहिए, वो भी होना चाहिए. There is no such magic. You have to build the magic. You have to build, first you have to choose the right audience and build the system according to that. Then the magic will happen. So if you are not feeling magic in your system, try to find what you do to create the magic. That why is going to give you the answer. We may give you the directions. We cannot give you the real answers to it, but we can definitely give the direction. And sir is trying to giving you a direction so that you can think on it. That's what I understood from प्रमोद, it. मुझे इसमें ऐसा लग रहा है ना कि there are many things which we design and we are not using it. But at the same time, to get the market feedback, get the user feedback, get the competitors study, what is that which we are trying to do? Before designing anything, you do a whole lot of research. That research is for what? Because see, FDDI में Footwear Development Institute, Delhi, one boy was working. He said, "Sir, I have to design the heel shoes for the girls." He is never going to use it. But from others' point of view, he became the user of that. He checked how the girls are walking with that high heel, what is the comfort or what is the discomfort level. He will never use it. But he has understood the user's problem and user's happiness with the kind of things, and then only he has designed. So even if we are not using that particular product which you have designed, then that's fine. But you have asked the client that what is the kind of problem is they are facing, how they will use, who will be the user, what will be his pocket, what will be his psychology, what will be his environment or the context in which he will be using. And by that, we actually become the user itself. So understanding the client, understanding the need, that's itself is you are putting your feet on the user's shoes. And by that, you are understanding the user. I don't have to go, because अगर इंडिया में काम कर रहे हैं, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, कितने यूजर के पास जाएंगे, फिर आप बोलेंगे मेरे पास तो आया नहीं, whatever you have designed it's not useful for me. That, so उसका एक मीन निकालते हैं हम लोग कि चलो यार
100 लोगों से पूछ लिया, अभी ग्लोबली तो 30 से एक्सेप्टेबल रेस्पोंडेंट साइज। अगर 30 लोगों ने हमें हाँ बोल दिया कि हाँ इस रिसर्च में 30 का रेस्पोंडेंट साइज एक्सेप्टेबल है, लेकिन डाटाबेस अगर एनालाइज करते हैं तो उसमें 500 डाटा चाहिए। तो डिजाइनर्स वी नेवर डू दैट database analysis. We go with the observation, we go with the discussion, we go with the feedback, we go with our own intuition and create it. इसलिए डिजाइन में और मैनेजमेंट में थोड़ा सा ऐसा गैप रहता है। वहाँ पे पूरा डाटा एनालाइज करेंगे, हम यहाँ पे विजुअल एनालाइज करेंगे और काम करेंगे। That's how I work, यार। Yeah. I agree with you, sir. So everything that we are trying to do, there is a design element to it. You have to find a way to solve it, you know. And you can take help of other people because 30 people का feedback लो, you know, जो sir ने process बनाया. You can continue with that and that may help you in some direction. That's a little bit of direction for you. सर आपके लिए हमारे ऑनलाइन ऑडियंस से एक सवाल है। जेनिल, कैन वी प्लीज हैव द क्वेश्चन? मैं पढ़ लेता हूं। अपॉर्चुनिटीज ऑफ करियर ग्रोथ इन डिजाइन इन इंडिया, हाउ इट कैन बी एनहांस्ड। प्लीज आस्क दिस क्वेश्चन टू मिस्टर प्रमोद सिंह। सर आपके जो थॉट्स है शेयर कीजिए प्लीज। So ये तो क्वेश्चन के आंसर हमने कई बार डिस्कस कर लिए ऑलरेडी। वी हैव टू बी टुगेदर एज ए डिजाइनर। इट्स नॉट नेसेसरली कि हम एक रूफ के नीचे है तो हम टुगेदर है, यू नो। We already have built the community. We have the communication channels offline also. You and also like our design studio is open for every people. You know, if you have any problem, you can come to the design studio. Every people will try to solve your problems. So we have taken one initiative and we want you to take the initiative. If every people start taking initiative in their own power, in your own capacity, in their own imagination, I think this thing will start moving on. You know, it's our responsibility. It's not individual responsibility. If we really want to grow the opportunities in India, first we have to showcase the portfolio. You know, we have to tell them, okay, this is what I have. You know, designer का interview होता है तो हम क्या देखते हैं? Portfolio देखते हैं। तो वैसे ही इंडिया को भी अपना एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। हमें साथ में मिलके पोजीशनिंग करनी पड़ेगी। So that positioning is basically way to create an opportunity for us. And this is not 1 day, 2 day, 1 year, 2 year program. It's not a program. It's a movement. We have to do it. मतलब हमको करते ही रहना है इसे कंटिन्यूअस बेसिस पे और इम्प्रूव करते रहना है। बिकॉज डिजाइन अप्रोच से हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, अलग अलग लोगों से फीडबैक ले सकते हैं और हम ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। आई थिंक दैट could be the direction to move ahead in that way. Thank you, sir, for your words. We also appreciate Mr. PK Jain for being our online audience and being active. We also have one more question from our online audience. Does a designer need to be generic or specialist? Anil sir, if you could answer it. Initially, it should be generic. Maybe in the later in life, he can be a specialist. Thank you. Initially, he had to be generic. So initially, when you start the career, I just wanted to give a little bit insight on it. क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी नए हैं जो डिजाइन में अभी एंटर कर रहे हैं। Initially, you have to experiment with multiple things. Once you find, okay, this is my niche where I want to go deep, then you have to be specific. Initially generic and then specific. This is, I'm correct, sir? Okay, sir. Thank you. अब ऐसे डिस्कशंस जब होता है तभी तो हमारा प्रो से प्रो मैक्स का जर्नी होता है। प्रो मैक्स यहाँ पे बैठे हैं हमारे दो सर। हाँ, एक 50 साल की एक्सपीरियंस के प्रो मैक्स है, इस एक के नाम में ही प्रो है, तो वो तो प्रो मैक्स होंगे ही। तो हमारा जो आपको किट मिला है, एनवेलप मिला है, सांस्कृतिक किट, वहां पे आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा। आपको अगर वो जर्नी लेनी है फ्रॉम प्रो टू प्रो मैक्स, यू कैन गो होम, अपने टाइम पे स्कैन करके हमारा एक एप्टीट्यूड टेस्ट है जो आप दे सकते हो। And we, the expert team at Sandskriti, is going to analyze your strengths and the areas of improvement, and we will give you one-on-one personalized consultation in your career, in your design journey, to be very precise. और दूसरा जो मैं बोल रहा था कि जो prompt card है उसका देखिए कि आपके पास एक dotted page भी होगा। So आपके कोड के साथ वो prompt card भी synced है। So whatever you capture in this meetup, we would love to know your thoughts. And काफी सारे क्योंकि takeaways मिल ही रहे हैं, हमको भी आपका takeaway चाहिए कि आपको ये event कैसा लगा। So please use our emojis and share your emotions with us, you on the wall,
when we call you to let us know how you felt about this event. लेकिन So this is a small exercise for everyone. You know, whatever you're feeling, try to express it and put it here so every other people can also see it. You know, that's the whole idea behind it. आप लोगों के पास एक एनवेलप है जिसमें हर एक कलर्स जैसे रेड ब्लू, तो जो जो चेयर्स के ऊपर बैठे उनके पास वो कलर्स है. उसमें जो एक पेपर है विच हैव अ डॉटेड पेपर विथ वाइट कलर, उसमें आपको डूडलिंग करना है, ठीक है? एंड देन एनी वन ऑफ यू गाइस कैन कम ऑन द स्टेज and draw anything you would like to draw. And this is the final activity which we are doing. ये होती रहेगी, कोई फाइनल नहीं है. हाँ. This is your place. Try to be there. Yeah. जो हम लोग यहीं पे हैं. Even Exactly. after the event, you want to talk, you want to talk to each other. This is the place where you can communicate to each other, right? So Yes. this is a meetup. It's not an event. Yeah. Pramod. Sir. Pramod and Veena, the first time I met you both only. So as a token of appreciation, I'd like to give you something. My book, this is Creating Identity. All the identity, not all, but till 2010, whatever identity I have done, it's there in this book. So that is for the signed cup. सर एक सेकंड, हमारे तरफ से एक छोटा सा एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है आपके लिए फ्रॉम द ट्राइब टू आवर गुरु Dr. Anil Sinha. Can we have a huge round of applause for his inspiring words, his insights, and for making the time and spending it with our designer tribe. Thank you so much, sir. अब सब लोग करना, हाँ, वो वाला काम, डूडल वाला काम मैं आके देखूंगा क्योंकि मैं करूंगा और मैं अकेला घटिया ड्राइंग सबके सामने नहीं शेयर करने वाला हूं. तो मेरे साथ एटलीस्ट 3-4 ऐसे ड्राइंग्स होने चाहिए जो काफी अच्छे हो. तो लेट अस नो व्हाट यू फील अबाउट आवर मीटअप यूजिंग दोज एलिमेंट्स एंड प्रॉम्प्ट्स दैट हैव बीन गिवन टू यू. ये जो सारे मोमेंट्स है वो हमने जो लास्ट 1 महीने में एक्टिविटीज करी है, जो रात भर सर ने बोला कि हमने सारा बनाया है, तो उसका हमने ये फोटोज कैप्चर करके ये इंसर्ट्स करा है. तो आपका भी इक्वल सपोर्ट वी वुड लाइक टू रिक्वायर. या एक खाली पॉइंट है. सो ये सारे बच्चे जो काम कर रहे हैं ना यहाँ पे खड़े होके, आप सब बैठे हो, सब खड़े, जगह है तो भी वो खड़े, बिकॉज दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी दे हैव टेकन टू मेक दिस ट्राइब, राइट. इन्होंने पूरे रात भर जग के कंटिन्यूअस 3 दिन से काम करते हुए आपके लिए कुछ क्रिएट किया है. वो बेसिकली कोई गिफ्ट नहीं है, वो हमारा एक कैसे लव है या फिर एक इमोशंस है दैट वी वांट टू एक्सप्रेस इन सम मैनर. तो ये जो फीडबैक है या जो भी एक्सप्रेशंस है आपके, वो आप प्लीज हमें दीजिएगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बिल्ड इट अप. हाँ, अभी नहीं. हाँ, तो पहले एंगेज करो, क्वेश्चन आंसर. you can do anything, just don't look here and there. ये एक्टिविटी आप चालू रखिए, प्रोग्राम भी चालू रहेगा, ये ऐसे कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, जस्ट लाइक दैट. सो अभी ऐसा नहीं कि फीडबैक फॉर्म अभी भर के देना है. यू हैव द टाइम, राइट समथिंग, व्हाटएवर यू वांट टू ड्रॉ, जस्ट ड्रॉ इट ऑन दी. तो अब तक तो मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो तो जाके सिर्फ पूछ रहा था, लेकिन बीना मैम जब काम करती है उनको पूरा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए. तो अब जो क्वेश्चंस हम दिखाएंगे स्क्रीन पे वो आपके ही क्वेश्चंस है. हमारे पास फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे जो क्वेश्चंस आए और जिनको कंपाइल करके हमने सोचा कि एक कॉमन ग्राउंड आ रहा है सब ट्राइब मेंबर्स के बीच में, वही क्वेश्चंस हम अब स्क्रीन में शेयर करेंगे. एंड दिस इज एन ओपन प्लेटफॉर्म. इफ समवन थिंक्स कि मुझे इस बारे में बात करनी है, प्लीज गो अहेड एंड गिव योर ओपिनियन. बीना मैम, ओवर टू यू. I think everyone is busy with the
एक्टिविटी। हाँ हाँ हाँ, वही वही वही। गाइज यू कैन डू एनीथिंग। एक दूसरे के कार्ड में देखोगे तो मजा नहीं आएगा। हो गया? जस्ट जस्ट कम अप। हाँ हाँ, या प्लीज कम। प्रमोद सर, he just want to share his doodle to you. हेलो, ये एक्चुअली अनिल सर के लिए बनाया है। जो पोस्टर में पीछे डूडल दिया हुआ ना ऊपर, वो एग्जैक्टली सेम लाइक अनिल सर। तो मैंने थैंक यू के लिए दिया फॉर योर, मतलब जो अनिल सर ने जो कुछ भी कहा हमको, वो गाइडेंस के लिए। अनिल सर, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। ये वो मैसेज देना चाहते हैं थ्रू दिस पर्टिकुलर आर्ट। भाई दिख सकता है क्या यहाँ पे ऐसे कुछ? I don't know. Please zoom in the camera. What a great example of someone. कौन से कैमरा फीट आ रही है इधर? Camera angle please. हाँ। हाँ ये देखिए। So you can play with this card, whatever you want. You can create, you can write, you can draw. Just give feedback with an open heart. कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। डिजाइनर है, डिजाइन जैसा फीडबैक ही देंगे हम। आवाज आई है ना? ठीक। सो सब अपने तरीके से इसे अब करें। मतलब इसमें कोई ऐसे कंटेंट लिखना है या कोई ऐसे स्पेसिफिक फीडबैक लिखना नहीं है। यू जस्ट हैव टू एक्सप्रेस विद एन आर्ट एनी फॉर्म दैट यू थिंक इज अ गुड, यू कैन जस्ट डू दैट। Just a second. I am we bringing have... Anil sir to yes, yes, show please come, him sir. how our tribe members are appreciating him. Please come. That's not the problem. Yes. It's very good, yaar, whoever has done it. You know? Wonderful. लेकिन इसमें देखो बहुत सिंपल सा चीज है कि कुछ रखो जिससे कि आइडेंटिटी बन जाए। मैंने वही दिखाई कि मुझे पर्टिकुलर ये हमारी अपनी आइडेंटिटी है, इसको कटाता नहीं हूँ मैं। Just a second, we have a small gift for you. जिसका जिसका डूडल हो गया, प्लीज कम ऑन द स्टेज. We have a small gift for the doodling. जो लोग जैसे जैसे उनका बनता जाए वो आते जाए, गिफ्ट लेते जाए, हमसे बात करते जाए और साथ में क्वेश्चन आंसर सेशन भी चलता जाएगा। नाश्ता भी खाएंगे, पिएंगे, चिल भी करेंगे। अभी सब ओपन हो, ट्राई टू एक्सप्रेस द वे यू वांट। मतलब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। वी आर डूइंग दैट एक्टिविटी पैरेलली अलोंग विद दिस वन। ठीक है, क्लियर है? लेट्स गो अहेड। कम आ जाओ, जिसका जिसका होते जा रहा है। कम कम। Okay, so we have another. Oh, what a great. जैसे कि संस्कृति एक कम्युनिटी है, तो लोगो इसमें यूज किया है और सर के हेयर भी इसमें यूज किए हैं फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रमोद सिन्हा। ओह, ऐसा लगता हो गया। थैंक यू। So this is slowly turning out to be us shaping together the culture of creativity, because जिस तरीके के doodles आ रहे हैं, So इनको तो मैं काफी टाइम से जानता हूँ। He is a creative writer more than 10 years. He has contributed in many different things. आपने जो लिखा है आप ही पढ़ के सुनाओगे अच्छे से। First of all, thank you so much. I'm not a designer, but I collaborate. I have to collaborate every time with the design team since I am looking into, in the content and branding, brand marketing. So designers are part of my tribe, always. And and I have specially come here and I've asked him, can I come? Because I'm allowed to, and he said, please do come. And actually, I've been into this industry for more than 25 years, but there is no end to learning. And design is also a space like any other thing, where you have to
go on, knowing the new things that's happening in the industry. So that's the reason. And thank you so much, sir. Got to know you from here and learned so many things. Yeah, there are several gaps, like when we deal with designers, because and one important thing, like I also want to have some questions also, like how do we collaborate, because no one wants iteration. Like even you're dealing with an agency or your own the people in our in-house team, like iteration is something, as a creative person, no one likes. Like you don't want to go do anything over and over again. So one is that, like even if I say for suppose web design or anything, something like that, so what is the process, like like suppose you're creating a website page, so do you, one way is like people usually they write the content and give it to the designer, like you design, but that person has do not have I got the problem. एक दूसरी लड़ाई होती है कंटेंट राइटर और डिजाइनर की. एक होता है डेवलपर और दूसरा होता है डिजाइनर. लेकिन हमने इतना अच्छे से इसको स्टिच किया है कि क्योंकि कंटेंट राइटिंग भी क्रिएटिव अप्रोच क्रिएटिव है, राइट? द पीपल हु हैव अ थॉट दे कैन राइट, द पीपल हु हैव थॉट दे कैन डिजाइन. सो basically content writing is complementing the design and design is complementing the content write up stage. लोगों को लगता है पहले डिजाइन करना चाहिए कि कंटेंट जो पार्ट आपको ज्यादा क्लियर है वो पहले करो, उसके बाद कर yeah. सकते हो. So what the approach I usually have been follow, and I think that brings in less iteration, is like if you create the content, because when you create the content, you create the visualization, you visualize how it should be presented, and if you can create a wireframe sort of mock-up and present it to the designer, it makes it easy. But at the same time, we want to understand, does it make restrain the designer from doing, like because I've seen, like being in the industry for so long, I can create exactly the page I want to in the design it in a mock-up, and but does it restrain the designer, like if they want to do something else on that? I like to have that, yeah. It's depend that how the user will interact with your design. So suppose if they are reading, then the content should be written first. If they are seeing it, then the visual has to be done first. I was working on the traffic island. I had the entire team of research and the content writer. Right. Content writer said that, sir, I'll write the content and then you can do. I said, no. I will design that circle first, and then you look for the research, which code will work here, how the things should reach out to the people. So it's depend upon, because the traffic island is more for the seeing and less for the reading. Yeah. Whereas the web design is more for the reading than the seeing. So Right. there the content writer will be more important than the visual. But in the identity and all, the visual will be more important than the content. Also there is a point, like it's important for designers also, I feel. Like I'll give you an example, like even if it's sort of simple blog post, you give a title like timeless email marketing examples, for example. Marketing is a different thing no altogether. no I'm saying, like, so the designer creates an yeah. Guys, Now everybody is gift. all volunteers, please come on the stage. All volunteers. Hitin, everyone. Jenil, Mihir. Just 2 minutes. Rushabh, come on the stage. भाई मेरे पास मार्कर है 7, लेकिन मुझे डिजाइन नहीं आता है एक भी, तो प्लीज मेरे पास से मार्कर लो और पीछे जो है Come forward.
वाई में, वाई में, वाई में. Guys, come on the stage. Everyone, just come. अरे नीचे ले लो ना. Come, everyone. અને નીચે ઉતરો. अरे वो ले लेंगे, वो ले लेंगे. आ रही. छोड़ो, छोड़ो. हाँ हाँ भाई. हाँ 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 थोड़ी बार बंद. वाह. Jaldi, please come on the stage. We need to click a photograph. Please click. हेलो वेलकम बैक. आई होप यू आर हैविंग अ ग्रेट टाइम एट होम. हमारे काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स जिनके काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आंसर हुए, एंड एज यू कैन सी दे आर नाउ creating caricatures, they are completing designs, completing each other's designs basically, and that is how a community works, where one person starts something and the other person completes it. हमारे स्टेज पे पूरी संस्कृति ट्राइब के अलग अलग लोग, अलग अलग डिज़ाइन बैकग्राउंड के लोग आके ग्राफिक्स बना रहे हैं, बातें कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, फेस बना रहे हैं बेस्ड ऑन देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन इमोशंस. Every face actually conveys an emotion. Every face is different. Hello. And we can see that those different faces are now coming together to create one community. That was the soul behind संस्कृत डिजाइन कम्युनिटी. अगर आप उसका एम्ब्लेम देखोगे, even there you can see that रिद्धि. it says Sanskriti design vibe with design बाकी tribe. लोगों के मुझे नाम नहीं पता है तो प्लीज आ आपकी जाइए, ट्राइब इतना हेल्प के कर साथ दीजिए. आप लाइव हो नेक्स्ट स्टेज पे घर पे. आप भी आपके हिसाब से आपने इस इवेंट से जो भी कैप्चर किया, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उसको कन्वे करता हुआ एक बढ़िया सा डिजाइन बना के हमें शेयर कर सकते हो. We take all forms of feedback from you. We respect all kind of creativity. आप जो भी हमें भेजेंगे उसको हम हमारी वेबसाइट पे संस्कृति डिजाइन कम्युनिटी की वेबसाइट पे दिखाएंगे. As you can see, people are creating amazing designs, अलग अलग तरह के डिजाइंस. कई बार लोग पूछते हैं कि what is a good design and what is not a good design. Well, there is no bad design. Every design serves a purpose. And as long as the design is serving a purpose, it's a good design. The purpose here is to build a community, to establish India as the global design hub, to build a true design culture where everyone is empowered, where everyone is great, where everyone is together. हम सब लोग अगर साथ मिलके इसी तरह से काम करते रहे, इसी तरह से कम्युनिटी बनाए, तो उसमें डेफिनेटली डिजाइन के फील्ड में इंडिया का पोजीशनिंग बहुत ही बढ़िया होगा. वी आर सुपर ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू. आप लोग हमारे साथ 3-4 घंटे तक बने रहे. We all have been together in this. As you can see, the entire tribe is taking a huge collage, is taking a beautiful photograph together. क्योंकि यार ट्राइब है तो वाइब है. अकेले करने में मजा तो है, लेकिन जो आप साथ मिलके कम्युनिटी के साथ मिलके एकजुट होकर मिल अचीव कर सकते हो, वो एक अकेला इंसान कभी नहीं कर सकता. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ ट्राइब. वी आर नॉट सेइंग दैट individuals don't matter. In fact, individuals make the tribe.
But when individuals come together with their amazing ideas, what they create with their complete synergy is mesmerizing. It goes beyond every human understanding. हेमल भाई हेमल भाई आगे move कर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सारे ट्राइब के मेंबर्स, संस्कृति का पूरा ट्राइब एक साथ इस वीडियो में मौजूद है। काफ़ी सारे अमेजिंग स्केचेस, अमेजिंग वीडियोस जो बनाए हैं ट्राइब ने, प्रमोद सर के, अनिल सिन्हा सर के, वो सब आप देख सकते हैं। हमारे वॉलंटियर्स, हमारे ट्राइब मेंबर्स अब सब एक हो चुके हैं। देयर इज़ नो वी, देयर इज़ नो यू, देयर इज़ ओनली अस। और हम सब मिलके इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमें इंश्योर करना चाहते हैं कि इंडिया का ग्लोबल पोजीशनिंग इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन बहुत ही वैल्यूएबल हो, उतना जितना हम डेफिनेटली डिजर्व करते हैं। सदियों से, सालों से इंडिया एक ज्ञान का समंदर रहा है। वी आर द न्यूक्लियस ऑफ नॉलेज। And if you can hear us in the background, our entire community is shouting together. As you can feel the beat. Can you feel the vibes? Can you feel the enjoyment? Can you feel the motion in the air? This is the power of togetherness. This is the power of a community. Guys, don't go. When powerful particles come Everyone, together, please collect your amazing things are certificate. created. हम सब हाँ, हाँ। एक एक अलग अलग पार्टिकल है, सैंड पार्टिकल. We all are different. We all are unique. Rushabh. And when we come together with varied perspectives, Next, we create I'm something just awesome. starting. We Just create something make sure जो everyone और कोई gets नहीं their बना सकता. certificates. And that is the purpose of design. Certificate arrange करा भी दे दे। You can see the entire tribe in motion. सब लोग बातें कर रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, सब लोग डिजाइन कर रहे हैं. That's the fun. That's the fun of being in a community. कि अगर आप एक डिजाइनर हो, आप अपने घर पे बैठ के अकेले डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, आपका पैशन है. But when you meet with like-minded people and when you get together and create something, that is mind-blowing. Guys, That is we outstanding. have the snacks here, right to the kitchen area. Please have snacks. I was ready You with can just start food. interaction. If you have any questions, then कि सब लोग एक दूसरे के साथ मिलके बात कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं. पीछे अलग-अलग फेसेस हमने जो स्केच पे बनाए हैं वो बन रहे हैं. Everyone is excited. Everyone is super happy to meet their fellow designers. And it's a great moment of joy. It's a great moment of glory for the entire community where everyone comes together to create something outstanding. The Sandskriti tribe is vibing. The tribe is happy. It was a great fruitful session. I hope you all also enjoyed it. अगर आपके कुछ भी फीडबैक है, आपके कुछ भी आंसर्स है, तो feel free to share with us on @Sandskriti on Instagram as well as LinkedIn. It's very easy to become a member of the tribe. You have to be a designer. You have to be enthusiastic. You have to be excited to take India to the forefront of the world. And that's all that matters. शुरुआत से लेके अभी तक काफ़ी सारे एक्साइटेड डिजाइनर्स हमारे साथ जुड़े रहे. We want to thank all of them, and we are looking forward to meet all of you. We have received so many questions, so many feedbacks from all of you. It's super great to meet all of you. As you can see, our tribe members are interacting with Dr. Anil Sana. The design created so many global identities. Someone who understands design from the utmost depth. And it's a great motion. It's a great moment for these designers, these young and upcoming designers, to interact with the legend himself. We can see the designers sketching and drawing and creating amazing things. As you can see, people are using their creativity, people are using their visuals to come up with various ideas. We just give them a simple basic prompt, and
they are making something out of it. They are using their creativity to create the uncreated, and that has been the motto of this event. As you can see, Mr. Pramod Sena, the founder of Sandcup Design Studio, is here. He's taking photographs with fellow designers, with his students, with a team of young and energetic individuals who are excited to meet him. As you can see, people have written their messages. People have given their amazing feedback. People have sketched beautiful art, and that is the kind of vibe we want. We want everyone to be excited. We want everyone to create the uncreated. It doesn't matter how it looks, as long as it is serving the purpose of letting out your inner feelings. As long as it connects with you, it matters. And that is the vibe of Sanskriti, where everyone is equal, where everyone is inclusive, where everyone is here for just one purpose. Design ki baat hai, to create the uncreated, to create the culture of creativity. It has been a pleasure connecting with all of you. आपके कुछ भी questions or feedback हो, do get back to us, and please connect with your tribe. Your tribe awaits you. Thank you so much for joining in. Have a great time ahead, and we hope to see you at Sanskriti. Thank you. Bye bye. Whatever takes you on, and you're at the gate too long. If the grass isn't greener, come back and check I'm still breathing. And you're untouchable. Tell 'em how you backflip for tragic. Show 'em how the struggle make magic. Make magic. There's nothing wrong with you. But it hurts to watch you fade away. I don't wanna see the end of the world without you. There's nothing wrong with you. You're perfect, you're cool. You take the best parts of you. Show me what love can do. Whenever takes you home, and you're at the gate too long. If the grass isn't greener, come back and check I'm still breathing. Whenever takes you home, and you're untouchable. Tell 'em how you backflip for tragic.
जब तुम झुके तब से तुम नजर में आ रुके हम तो हो गए समा धीरे धीरे थालमा अब तो होना है वही जो बनाए जाना हम तो हो गए समा धीरे धीरे थालमा अब तो होना है वही जो बनाए जाना हम तो उड़ गए उड़ गए उड़ गए ऐसी अजनबी थी आपसे कि हमसे ना कभी कोई आपसे हम तो हो गए समा धीरे धीरे थालमा अब तो होना है वही जो बनाए जाना हम तो हो गए समा धीरे धीरे थालमा हेलो अब तो होना है वही जो बनाए जाना हम तो उड़ गए उड़ गए उड़ गए हम तो हैं समय हम तो हैं जमीन Guys, हमसे कभी don't forget to collect your certificates. We do have certificates at the help desk. So everyone, please go at the help desk and collect your certificates. हमसे ना कभी हम तो हो गए समा Please collect धीरे your धीरे certificates from help desk. You will get by saying your code. उड़ गए खोलो खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे खूटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके आसमां का शाम आना आज हमें है सजाना क्यों इस कदर हैरान तू मौसम का है मेहमान तू ओ दुनिया सजी तेरे लिए खुद को जरा पहचान तू तू धूप है झम से बिखर तू है नदी बेखबर बह चल कहीं उड़ चल कहीं दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही ओ क्यों इस कदर हैरान तू मौसम का है मेहमान तू बासी जिंदगी उदासी ताजी हंसने को राजी गर्म गर्म सारी अभी अभी है उतारी
जिंदगी तो है बताशा, मीठी मीठी सी है आशा, चकले रख ले हथेली से ढक ले से। तुझ में अगर प्यास है, बारिश का घर भी पास है। रोके तुझे कोई क्यों भला, संग संग तेरे आकाश है। धूल धूप है शम से बिखर, तू है नदी बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। खुल गया आसमां का रास्ता, देखो खुल गया। मिल गया खो गया था जो सितारा, मिल गया मिल गया रोशन।